Assalamu alaikum and good morning Kashmir. We are back with this all-important high-octane encounter. It is Victoria Kupwara taking on Ramhall Reds. The very first ball down the leg and we'll have to wait and watch. The ball kissed at the pad on the way straight down to the short fine for no run. It's none for none in ever number one. Again a colleague in the com box. Nazir, how do you do nowadays? And what about this very match? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत सभी व्यूवर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। और मुकाबला शुरू हो चुका है पहली बारी। हालांकि पहला ओवर इसमें प्रगति पर है आसिफ रसूल हैं गेंदबाज, इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद। और यहां पे अगर बात करें इस मुकाबले की, एक निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला जो कि रामहाल क्रिकेट लीग के अंतर्गत इसमें शुरू हो चुका है। और प्रारंभिक जोड़ी वसीम काचरू और खान वसीम के रूप में पहुंच चुके हैं। हालांकि विक्टोरिया के टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए रामहाल रेड्स को। इस बार अच्छी गेंद वहां पर खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से चकमा दिया और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। शुरुआत हो चली है आकर्षक, निर्णायक और महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय बीच मैदान में गालजू का खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान, और इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ Wasim Kachru on strike and Asif Rasool, the prolific prospect, is bowling in the very first. Goes and bows to Kachru, and Kachru little gentle tickle of the blade and down to where is the short fine, and Jalil will do the fielding, but in the meantime both the batters scamper through for a quick single and they're up the mark with that single. It's Wasim Kachru up the mark, and so is Ramhall Reds. They're 1 for none in ever number one. The very first run of the blade of Wasim Kachru on that occasion. Nazir, thank you, but Manzoor Khan, Azishan and Parvez Rasool and others, thank you for tuning into the live broadcast. But Manzoor, once again I'm really thankful to. It's 1 for none in ever number one, and Muzammil Pare and others are the part of live broadcast. Next ball coming up, Asif Rasool bowling in the right areas and not allowing the batters break free at the start of the innings. Mir Muhammad Akib Tale, Rafiq and John Muhammad. Thank you, Latif Ahmad Kari and others. Next ball from Asif Rasool, goes and bows. Oh, that's a good ball and clipped away, but the batters wanted to escape for a quick single but sensibly sent back. Oh, chance for the two batters to scamper through, but in the end deciding against it. It's 1 for none in ever number one. You can join us in numbers and you can catch the drama, the fun, the excitement, the jubilation and the joy which will be coming your way in this very match, and in this part of the world you can enjoy this very game. It is just the beginning and it's early morning here at the centre, but with the passage of time I promise you a big match coming your way. Javed Farooq and others, thank you. Next ball coming up, it's 5 balls done and dusted, 1 on the board. Oh, that's a beauty. That is another good delivery on money, and both the batters are running across and in the end made it with ease. So there is 1 more run added to the tally. It's 2 for none after the completion of over number 1. The very vital toss won by Victoria Kupwara, and their captain decided to bowl first in this all-important high-octane and ultra HD match here at the centre of Galizu Kupwara. Nazir, हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि मुकाबला बड़ा है, निर्णायक मुकाबला। और ऐसे में जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां हमने देखी होंगी, इससे पूर्व भी आपने देखा होगा सभी व्यूअर्स ने कि रामहाल रेड्स और विक्टोरिया कुपवारा के विरुद्ध जब मुकाबला होता है कांटे की टक्कर का मुकाबला, और आज उसी मुद्रा में एक बहुत बड़ा मुकाबला। हालांकि लोकप्रिय खिलाड़ी इस मुकाबले में खेल रहे हैं। अगर कश्मीर क्षेत्र की पूरी बात करें तो एक निर्णायक मुकाबला। बने रहिए हमारे साथ जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। सभी व्यूअर्स का अभिवादन किया जा रहा है। एक कहना चाहिए महत्वपूर्ण और आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में। हालांकि टॉस जीता विक्टोरिया कुपवारा की टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। हालांकि उन्होंने आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए रामहाल रेड्स की टीम को। 2 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद आसिफ रसूल ने आज गेंदबाजी प्रारंभ की थी, और उस छोर से देखना है गेंदबाजी का मोर्चा किसे दिया जाता है। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति 2 रन बगैर नुकसान के खान वसीम इस समय 1 पे नाबाद 2 गेंदों का सामना किया, और वसीम काचरू ने 1 रन बनाया है, 4 गेंदों का सामना किया है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद आज इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो अंपायर्स की बात करें, एडवोकेट हिलाल और मेहराजुद्दीन जो काफी अनुभवी अंपायर है, काफी बेहतरीन अनुभव है उनके पास और पूरा अनुभव जोड़ते हुए इस मुकाबले में खान वजीर हमारे साथ बने हुए हैं यूनिस सवानी के साथ। बहुत जल्द आप तक प्लेइंग 11 की सूचना पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल बने रहिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ। एक आकर्षक रोमांचक स्थिति इस मुकाबले की। हालांकि शुरुआत
शुरुआती क्षण है और जैसे ही मुकाबला आगे बढ़ेगा आशा की जा रही है क्रिकेट के समर्थक दीवाने, हालांकि मनोहर भाई शुरुआत हो चली है मुकाबले की और जिधर नजर दौड़ाई जाए इस समय दर्शक का खचाखच भरा हुआ यह मैदान और जैसे ही मुकाबला आगे बढ़ेगा आशा की जा रही है कि एक संघर्षपूर्ण और आकर्षक हर्षोल्लास देखने को मिलेगा इस मुकाबले को लेकर के। वार मकसूद हमारे साथ बने हुए हैं, शेख अतर के साथ फैसल हमीद, इशफाक वानी और लतीफ अहमद करे भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। प्रिंस शाकिर के साथ धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। नए ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी सईद सागर के पास जो कि प्रारंभ करेंगे आसिफ रसूल के साथ। पहला ओवर शुरुआती क्षण और महत्वपूर्ण अच्छी लय में थे वहां पर गेंदबाज आसिफ रसूल। 2 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। नए ओवर की शुरुआत सईद सागर है गेंदबाज और उनके सामने होंगे बल्लेबाज वसीम खान। सईद सागर उस छोर से दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। नए ओवर की पहली गेंद लेकर के अच्छी गेंद इस बार आप है स्टंप पर, हालांकि नो का इशारा वहां पर अंपायर महराजुद्दीन का, तो यहां पर एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ रमहाल रेड्स की टीम को 3 रन बगैर नुकसान के। And it's a no ball. It's going to be free hit number 1 of the match, and we'll have to wait and watch. On strike will be Wasim Khan and Ashik Hussain. Thank you, Mohammad Murtaza and Sheikh Javed and Bat Yusuf and others. Thank you. It's time to welcome entire Valley. Join us in numbers and catch this big match. High octane coming your way. And Said Sagar will bowl the free hit. Asif Rasool is spinning at first slip. The big name of the Valley is at first slip. And free hit coming up. On strike is Wasim Khan. We'll have to wait and watch. Runs in and that turn, change of pace, and that's gone, dispatched all the way down to the mid-wicket boundary for 4. And as you look at that turn, he campers back and saw that Said Sagar shortened the length of the ball, and he was early into that turn, and he was able to read that turn with ease and dispatched it all the way down to the boundary. 7 for none. We are in over number 2. It was the very first ball, to be precise, because the ball prior to this one it was a no ball. Free ball dispatched to the boundary. 7 for none. Over number 2. Ball number 2 coming up. Said Sagar from far end. On strike Wasim Khan. He's up the mark with that boundary. Exactly, he's up to 5 now, to be precise. Javilon, Khurshid, Mir Bilal and Farooq, thank you all. Look at that one. That's a good shot, but won't be able to pierce the gap on offside. It's a dot ball. Thank you. And it is 7 for the loss of no wicket. We are in over number 2 of the match. हाँ जी बिल्कुल, शुरुआती क्षण है, आकर्षक मुकाबला और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। खान वसीम और वसीम काचरू जो कि दिग्गज बल्लेबाज हैं जहां तक का रमहाल रेड्स की टीम का सवाल है, प्रारंभिक जोड़ी के रूप में और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं। अच्छा खासा अनुभव है उनके पास और उस अनुभव का आज प्रयोग करना होगा इस बड़े मुकाबले में जो कि कांटे की टक्कर या क्रिकेट की भाषा में कहें तो क्रिकेट का महासंग्राम में समय गालजू के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में चलता हुआ। सईद सागर उस ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद बार अच्छी गेंद, खिलाड़ियों के सारे ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद हवा में, उस और खिलाड़ी पीछे, जब तक उसको फील्ड किया जाता देखना है रोक पाते अथवा नहीं। जी हां, जब तक सीमा रेखा के अंदर उसको फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था रन बटोरने का। 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 9 रन 1.3 के बाद खान वसीम और वसीम काचरू की जोड़ी समय बीच मैदान में गेंदबाजी के मोर्चे पे सईद सागर। Ramhall Reds, they got Wasim the captain, Adil Rathir, Firdaus Swani, Hamid bin Bashir, Hanif bin Aziz, Mohammad Arsalan, Muzammil, Nasir Ganai, Sajid Amla, Wasim Kachru and Zakir Bablu is in the lineup. This is Ramhall Reds for you, Victoria Cricket Club Kupwara. They got Zur Peter, captain Asif Rasool, Bilal, Ishtiaq Rasool, Jalil Bhatt is in the lineup. And after this one off the outside edge, this match carried on to the fielder. No, Dawson, after 2 bounces into the safe hands of the third man fielder, the 2 batters managed to scamper through for kick single. 1 more run added into the double figures. 10 for none. We are in over number 2. Ishtiaq Rasool, Ishnaq is playing, Jalil Bhatt, Umas Ittu, Said Sagar, Shah Nadeem, Shahid Mir, Zahoor Sofi and Zakir Mani. You can understand how big names are playing today. Valley, it's high time. Join us in numbers. Where are you? Entire Valley is requested. Join us and catch the fun, the drama of the cricket, and you can witness the game at your home comfort on JK Sports Time at the moment. It's 10 for none. We are in over number 2 of the match. Nazir. मैं आपकी बात से सहमत हूं मनोहर भाई, क्योंकि आपके चहीते सितारे दोनों टीमों की अगर हम बात करें, चाहे रमहाल रेड्स की बात हो या फिर विक्टोरिया कुपवारा की बात हो, बड़े विशुल्क और निशुल्क नाम जो है इस मुकाबले में खेल रहे हैं और ऐसे में क्रिकेट के समर्थकों को एक निवेदन दिया जा रहा है जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ, आइए जुड़ जाइए और मजा लीजिए इस खूबसूरत मुकाबले का। क्रिकेट का महासंग्राम इस समय बीच मैदान में गालजू का ये खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ मीर जावेद जो कि रेगुलर व्यूअर है हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। सईद सागर की गेंद पर लेग स्टंप पर आती हुई और अंतिम समय में बैट और पैड मिलाकर सम्मानजनक रूप से खेला। अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों की, खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान और स्कोरबोर्ड को गतिशील
गतिशील रखना होगा। शुरुआती ओवर में मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति जो है पावर प्ले का प्रयोग करना होगा और ऐसे में विकेट्स को भी सुरक्षित रखना होगा। नवाब रिजवी हमारे साथ बने हुए प्रिंस शाकिर के साथ वसीम अकबर और फयाज अहमद भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए डार उबैद के साथ। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। और इस समय पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है। सईद सागर है गेंदबाज और सामने है वसीम काचरू। खान वसीम जो कि समय नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, कुल योग 10 रन। रामहाल रेड्स का जो कि आमंत्रित तौर पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए सईद सागर इस ओवर में अगली बार उनकी ये गेंद और इस बार फिर लेग स्टंप पर पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, लेकिन इस बार वहां पर सफल हुए दोनों बल्लेबाज अपने छोड़ बदलने के लिए और एक रन और खाते में जुड़ता हुआ 11 रन हो गया है। कुल योग 2 ओवर की समाप्ति के बाद रामहाल रेड्स आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करते हैं। क्या लाजवाब और विश्वसनीय प्रदर्शन। हालांकि अगर मुकाबले की बात की जाए, एक बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला, जी दूसरा सेमीफाइनल है इस प्रतियोगिता जो कि रामहाल क्रिकेट लीग सत्र 1 वर्ष 2022 के अंतर्गत। और ऐसे में मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेते हुए धीरे धीरे से जिधर नजर दौड़ाई जाए, अगर उस और नजर दौड़ाई जाए जहां से आमंत्रण है इस मैदान का, वहां से लगातार दर्शक मैदान में आते हुए एक महत्वपूर्ण संघर्षपूर्ण मुकाबला बीच मैदान में बना हुआ। 2 ओवर समाप्त, 11 रन बगैर नुकसान के वसीम काचरू और खान वसीम की जोड़ी बीच मैदान में। Thank you, Javed Wani, for your love. Where is Kashmir today? Join us in numbers. I promise you, it's a big match, and you will remember this match till your life. And thank you, everyone. Shakir and others. Thank you, Syed Ahmed and Nisar. Said Sagar bowled their very first over. That was right on money on target. He didn't give an inch away, but apart from that early scare of no ball, oh, that's a wrong line. But Jalil does well. What could have been a boundary limits the scoring down to just a single run, and in that process, both the batters managed to scamper through. Score moves to 12 for the loss of no wicket. We are in over number 3 of the match. Asif Rasool is bowling. They got the likes of Umesh Itu. They got Ishtiaq Nag in the lineup. They got Said Sagar. Asif Rasool on that occasion wrapped him on the pad, and he wanted to clip that one to the onside. Doesn't manage. And it doesn't succeed. It's a dot ball. It's 12 for none. We are in over number 3 of the match. Nazir, you may carry on for the next few balls. 2.2 ओवर की गेंदबाजी, 12 रन रामहाल रेड्स का स्कोर। खान वसीम और वसीम काचरू की जोड़ी समय बीच मैदान में। हालांकि वसीम काचरू 3 पे नाबाद 7 गेंदों का सामना किया, संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर आसिफ रसूल ये गेंद ऑफ स्टंप पर उसको मोड़ने में सफल हुए वहां पर बल्लेबाज और चहलकदमी करते जब तक गेंद फील्ड होकर के वापस गेंदबाज के हाथ आती। पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बटोरने का। 13 रन 2.3 के बाद और वसीम खान अब स्ट्राइक लेने की तैयारी करते हैं। मीर जुबैर बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार विचार देने के लिए। महसूद मीर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, नदीम किचलो के साथ और करण ठाकर भी इस मुकाबले में बने हुए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन। इस बार अच्छी गेंद अपने आप को वहां पर संतुलित करते हैं, हालांकि जगह जरूर बनाई थी लेकिन उस और खिलाड़ी थे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 13 रन। और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपुर, एमएचएम आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपुर, फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट इंडिया। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, हालांकि रन लेने की कोशिश लेकिन वहां पर कहना चाहिए कि एक अतिरिक्त जोखिम उठाना चाहते थे बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से वापस भेजा। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। तीसरे ओवर में 13 रन। रामहाल रेड्स विक्टोरिया कुपवारा के विरुद्ध दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, निर्णायक और रोमांचक स्थिति समय मुकाबले में बनी हुई। इस ओवर में अगली बार आसिफ रसूल और बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर, अंतिम समय में उसको हल्के से दिशा दे दी उस और खिलाड़ी, जब तक फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के पास 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 3 ओवर पूरे 14 रन बगैर नुकसान के खान वसीम और वसीम काचरू की जोड़ी बीच मैदान में रामहाल रेड्स की ओर से। It's 14 for none after the completion of 3 overs. We're going to be over number 4. Ramhall Reds, after being put into bat, after being asked to bat on, they are 14 for none after the completion of 3 overs. This is just the start of this big match, and they need to work on the basics, stuck to the basics, and wait for the bad balls and give respect to the good balls. And the way two batters are batting at the moment, this seems to be really serious and serious prospect out in the middle, and they're really playing this game serious with a serious intent, and they're giving everything to it, and they're really sweating it out in the middle. And Asif Rasool bowled that once again economic from him. It's 14 for the loss of no wicket after 3 overs. Said Sagar will continue from the other end, and I would definitely love to request everyone from Valley of Kashmir, join us and catch the cricket at your doorsteps today and at your home comfort. And Javed Shah writes in something. Thank you for your line. He was talking about Akashwani and others. Thank you. It's 14 for none. Ball 1 of over number 4 coming up, and we'll have to wait and watch. Now Ishtiaq now get first slip. Then third man back with a point. Extra cover, short extra cover, mid off on the onside, short mid on, and a short mid wicket and short fine. Oh, on that occasion he manages to keep that one out towards the short point.
and in that process both the batters managed to scamper through. 15 for the loss of no wicket. We are in over number 4 of the match. चौथा ओवर पारी का चलता हुआ 15 रन 3.1 के बाद रामहल रेड्स टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर विक्टोरिया कपवारा द्वारा बल्लेबाजी करते हैं और बीच मैदान में नाबाद जोड़ी जो कि प्रारंभ कर चुकी है रामहल रेड्स के लिए खान वसीम जो कि 9 पे नाबाद है और वसीम काचरू 5 पे नाबाद। 11 गेंदों का सामना किया गेंदबाजी के मोर्चे पे सईद सागर जो कि अपने कोटे का दूसरा और कुल मिलाकर विक्टोरिया की ओर से पारी का चौथा ओवर लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट उनकी ये गेंद इस बार अच्छी गेंद और उसको मोड़ने में सफल हुए 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो एक और जन्नतेदार स्ट्रोक 4 रन खाते में आते हुए और कुल योग 19 पे जा पहुंचा है 3.2 के बाद। अच्छी रणनीति खराब गेंदों को सही नसीहत और सम्मानजनक रूप से कहना चाहिए दोनों बल्लेबाज क्या बेहतरीन प्रदर्शन। हालांकि ये शुरुआती क्षण है और ऐसे में आशा की जा रही है क्रिकेट के समर्थक दीवाने प्रेमी चाहते हैं भले ही परिणाम कुछ भी हो लेकिन संघर्षपूर्ण कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिले और उसी मुद्रा में तमाम दर्शक इस समय जहां से भी आए हैं जिस स्थान से भी आए हैं इस समय एक गालजू का मैदान बना हुआ और आकर्षक मुकाबला वही जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी चाहते व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन स्वागत धन्यवाद करना चाहेंगे। जुड़ जाइए मजा लीजिए इस खूबसूरत मुकाबले का। यदि आप चाहें तो डिजिटल स्टार्स के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं। प्रतीक्षा रहेगी आपके इस सम्मान की। सईद सागर इस ओवर में आखिरी बार राइट आर्म उनकी ये गेंद और इस बार ऑफिस अंपायर बाहर एक किनारा हवा में उड़ती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर एक और चौका। लगातार इस समय प्रहार होते हुए और 4 रन और खाते में जुड़ते हुए तो 23 हो गया है कुल योग 3.3 के बाद। मुनव्वर क्या वातावरण है अगर क्रिकेट के इस मुकाबले की बात की जाए। No doubt about that, and this is a wonderful game of cricket, and what a way to get underway. 23 for none. The ball flies up the outside edge. Not convincing, but nonetheless he will take that. It's 23. They're up to fly, to be precise, for no loss in over number 4. Next ball coming up. Said Sagar, bit unlucky today. Of that outside edge, that didn't carry to the filler, and it goes down to the boundary. Now 3 men behind Scare, and there is backward a point. Zur Peter Dirch, extra cover on the boundary, short extra cover, and made off in place. Oh, look at that turn, pulled away, what a shot! Can you believe pulling that turn with authority down to the boundary for 4, and Wasim is turning it on. Wasim Khan, the captain of the side, is not allowing Said Sagar to settle down. Smarty boy Umar Bhatt and Darul Top and Sultani Foods, Rai Sophie Shoaib and others, thank you for your love and support. That is a wonderful shot, and with that boundary 27 hat-trick of first to him on that occasion. 3 boundaries of 3 balls, 2 convincing, 1 of that outside edge. Unlucky got the bowler, but batting side will take that 27 for none. We are in over number 4. 3.4 ओवर की गेंदबाजी 27 बगैर नुकसान के वसीम काचरू और खान वसीम की जोड़ी बीच मैदान में और खान वसीम इस समय तेज तरार पारी खेलते हुए 21 पे नाबाद है। 12 गेंदों का सामना किया और सामना करने के लिए एक बार फिर तैयार सईद सागर का थोड़ा सा खर्चीला ओवर साबित हुआ। 3 अब तक का चौके लग चुके हैं इस ओवर में। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल और कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। चौथा चौका, 4 गेंदों से 4 चौके। क्या कहना है इस बल्लेबाज का और आत्मविश्वास देखिए जिस प्रकार से गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले रहे हैं। What can Sagar do? And Sagar smiles and he's staring at the batsman, gazing at him, and he conveys a word to him. What are you doing, man? He says, I'm standing still and am I able to punish you badly? Ruthless batting out in the middle, flurry of boundaries, 31 on the board, fly up to fly, 31 for none. We are in over number 4. Last ball coming up. Thank you Mohammad Iqbal Sheikh, Akash Bandi, Ray Sophie and Mudal and Irshad Nazir and Mudassir Ahmad. What a match underway. Join us and catch the fun, the excitement. This is game of cricket at its best here at Victoria Kupwara and Said Sagar. पूरी कमेंट्री टीम इस समय हर संभव कोशिश में लगी हुई, हर संभव प्रयास में लगी हुई कि बेहतर से बेहतर प्रसारण आप चाहते व्यूअर्स तक पहुंचाया जाए। घर बैठे आपके घर के दहलीज पर जेके स्पोर्ट्स टाइम में इस समय क्रिकेट का ये महायुद्ध लेकर के आता हुआ रामहल क्रिकेट लीग के अनुरूप से। और इस समय 31 के बाद खान वसीम 25 पे नाबाद, अशरफ डार हमारे साथ बने हुए, तारिक अहमद के साथ रईस सोफी और रईस अहमद जरकर भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। आकाश बांडे भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए शाहिद परे के साथ जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण गालजू कुपवारा के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान से आप तक पहुंचता हुआ प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपोर, एमएचएम, आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपोर, फैशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। और धन्यवाद करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स का भी जिस प्रकार से पूरा समर्थन सहयोग देते हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम को। तो फिलहाल स्थिति यह है कि 3.5 के बाद समाप्ति वहां पर गेंद कहीं खो गई है और इसीलिए खेल
थोड़ी देर के रुका हुआ, हमारे पास पर्याप्त समय है अपने श्रोताओं से बातचीत करने का, अपने व्यूअर्स से बातचीत करने का। 3.531 बगैर नुकसान के रामहाल क्रिकेट लीग सत्र 1 वर्ष 2022 के अंतर्गत ये दूसरा सेमीफाइनल निर्णायक और कहना चाहिए विश्वसनीय प्रदर्शन से बीच मैदान में, और टॉस आज सुबह विक्टोरिया कपवारा की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। आमंत्रित किया वहां पर बल्लेबाजी के लिए रामहाल रेड्स ने, लेकिन कहना चाहिए हालांकि विकेट को देखते हुए शायद देवी चाहते थे शुरुआती ओवर में बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहेगा, लेकिन निर्णय गलत साबित होता हुआ, और जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज खासकर वसीम खान बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। It's quite some achievement. It's 31 for none after the completion of 3.5 ball. Last ball coming up. 4 boundaries to Wasim Khan. And Sagar will have to bowl the final ball of his over, and it's 4th over of the match. Last ball coming up. And the field is stationed on either side of the track. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 men on the off and 2 on the on. Only 2 fielders on the on side. Still bowling off trackers and allowing the batsman to pull at it. And he has been able, and he succeed thrice. And Rafi Bani writes in, thank you. He's watching from the corridors of multi-fashion branded store Agriclan Magam opposite petrol pump. Thank you. In the meantime, last ball coming up. Over number 4, ball number last coming up. On strike is Wasim Khan on to quarter 50, 25 of just 13 balls. Next ball to Wasim Khan, and Wasim Khan circumspect and played that one with soft hands only as far as short mid wicket is concerned, senior mid wicket to be precise. One more run added to the tally. Score moves on to 32 for none. 4 overs done in Dusty. They're scoring at the rate of 8, exactly at the rate of 8, and with this current run rate they can score 160, but it will be early to say that. Ramhall Reds will be posting 160 or something like that, but they will definitely love to pile up in excess of 200. That can really set the tone up, because Ishtiyaq Nag is playing, Asif Rasool is playing, Jalil Bhatt is there, Said Sagar is there, Zur Peter is there, big names of the valley, Umesh Itu is there. That is quite some achievement, bringing on these big names of the valley, and it won't be easy for Ramhall Reds to bowl against the big gants of the valley. Ishtiyaq is smiling at the moment, but it won't be easy for the Ramhall Reds bowling. They need to bowl in the right here. It's 32 for none after 4 overs. We are going to be number 5 of the match. Mandatory restrictions are on, and this broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Real Estate Pampur, Shining Star Pampur, and MHM Multi-Fashion Branded Store Agriclan Magam. Ball number 1 over number 5 Nazir. आसिफ रसूल जो कि लगातार इस छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पे लगे हैं, और कहना चाहिए कि किस प्रकार से, हालांकि एक विकेट की आवश्यकता है यहाँ पर, प्रयास जरूर कर रहे हैं। 4 ओवर में 32 रन बगैर नुकसान के वसीम खान इस समय 26 पे नाबाद, और वसीम काचरू 5 पे नाबाद। 11 गेंदों का सामना किया आसिफ रसूल कोटे का तीसरा ओवर लेकर। पहली गेंद, और बार पहली गेंद हवा में, उस और खिलाड़ी और आसान सा कैच, और ये रहा पहला विकेट वहां पर। जिस प्रकार की आवश्यकता नहीं थी स्ट्रोक खेलने की, उसी मुद्रा में स्ट्रोक वहां पर खेल गए, और इस प्रकार से पहले विकेट को किया चलता। तो कहीं ना कहीं 32 पे पहला झटका मिलता हुआ, और 4.1 के बाद आसिफ रसूल को मिलने वाली यह सफलता। मिडल स्टंप पे आती हुई गेंद, हालांकि स्ट्रोक में ताकत नहीं दे पाए, थोड़ा जल्दी खेल गए वहां पर बल्लेबाज, और आसान सा कैच दे बैठे। जलील भट्ट ने संभवतः वो कैच पकड़ा, और इस प्रकार से 32 पे 1 रामहाल रेड्स की टीम। मुनव्वर भाई, Well, we have seen the back of Wasim Khan, the captain of the side, but Wasim Khan was still unbeaten out in the middle. But that is quite some achievement, and the wicket goes to Asif Rasool and Jalil Bhatt, the fielder. That was a soft dismissal and a regulation catch to the fielder there at a short mid wicket. And there goes wicket number 1. And we'll have to wait and watch who's going to walk in next after the fall of Wasim Khan. But they also got a wonderful batting side, and that's a bunch of young birdies, a group of young guns for Ramhall Reds, and they're using for this all-important cricket match. Semi-final number 2, RCL Ramhall Cricket League, and we are on the way with semi-final number 2, HCC Reds Handwara. They're already into the finals of RCL year 2022. Somebody wants to know the playing 11. Let me take you through the playing 11. I threw it out earlier on, but you have missed out on that occasion. But let me remind you the playing 11 again. We'll have to wait and watch. It's still taking some time. The new man was arrived at the crease. We'll have to wait and watch who's walking. Saqib, it is Sajid Amla walks into the middle, and last time he was undone with that beauty from Asif Rasool. He was clean bowled on that occasion, but today it's a different day, and we'll have to wait and watch. We're having issues
It isn't working at the moment, my dear buddy. You wanted to know the playing next ball. Oh, that's a good ball. And Sajid Amla can't do very much. What a delivery. And Asif Rasool only at its best. Bowling that turn. Coming into the batsman. On money. On target straight away to the newcomer. It's 32 for 1. Amla is in. 32 से 1 विकेट के नुकसान पर 4.2 के बाद और आसिफ रसूल है गेंदबाज आमला के लिए इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों के साथ सीधे बल्ले से उसको खेला जरूर और वहां पर चहलकदमी करते हैं अपना खाता खोला उनका व्यक्तिगत योग यानी कि साजिद आमला का व्यक्तिगत योग 1 कुल योग 33 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 के बाद और अच्छा खासा अनुभव है आसिफ रसूल के पास अगर गेंदबाजी की बात करें तो ऐसे में एक कड़ी परीक्षा होने जा रही है बल्लेबाज की इस ओवर में अगली बार आसिफ रसूल राइट आर्म उनकी गेंद अच्छी गेंद फिर ऑफ स्टंप पर जगह मिली हालांकि खेला जरूर वहां पर रन लेने की कोशिश लेकिन जैसे देखा गेंद सीधे वहां पर फील्डर के हाथ में सुरक्षित अपने कदम क्रीज में खींचे रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं स्कोर अभी भी टिका हुआ 33 से 1 विकेट के नुकसान पर 4.4 के बाद वाहिद जीतू आकाश बांडे इमरान और तनवीर मनहास भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए इसी ओवर में अगली बार और इस बार जगह मिली घूम कर मारा ऊंचा लंबा स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा से बाहर और पारी का पहला छक्का वहां पर वसीम काचरू के बल्ले से निकलता हुआ 39 पे 1 Kachru, you beauty, and Asif Rasool can't believe but that has been dispatched over Skylark for 6 and this is Wasim Kachru, the wicketkeeper batsman of the valley, the star of the valley with that wonderful hit all the way down to the boundary, convincing one and all the way over Skylark for 6 and moves on to 39 for the loss of 1 over number 5, ball number lost coming up, this is the last ball of the 5th over, thank you Pirzada, Saldar and others, but Jamshed and shaking ball of that gentle tickle all the way down to the final leg. Phil against the chase, won't get there. It's a boundary 10 the 5th, 43 for the loss of 1 at the completion of fires. Let me take you through the playing 11 of both the teams. Well, start with Ramhall Reds, Khan Wasim, the captain, Adil Rathar, Firdaus Swani, it's Wasim Kachru, the captain of the team, and Hamid bin Bashir, Hanif bin Aziz, Mohammad Arsalan, Muzammil, Nasir Ganai, Sajid Amla, Wasim Kachru and Zakir Bablu. Yeah, Wasim Khan is the captain of the team. Then Zurpreet, the captain of Victoria, Asif Rasool, Bilal, Ishtiyaq Rasool, Ishnag is playing. Then followed Jalil Bhatt, Umas Itu, Saeed Sagar, Shah Nadeem, Shahid Mir, and Zahoor Sofi and Zakir Vani is another big prospect. He is a wonderful cricketer, but at the moment it's 43 for the loss of Nazir and won't be easy for the two batters to bat on. But the way they're batting at the moment, they're reaping the harvest and they are trying their level best. They manage 43 at the cost of 1. That means the batting is getting easier with the passage of time on this very quite well benign track here at Victoria Kupwara, and it's over number 6, ball number 1 coming from the far end. It will be Ishtiyaq Nag will be bowling for the first time in this match. Nazir. परिवर्तन के तौर पर इश्तियाक रसूल यानी कि इश्नाक को लगाया गया है 43 से 1 विकेट के नुकसान पर 5.0 यानी कि 5 ओवर की समाप्ति के नए ओवर की शुरुआत पहला परिवर्तन इश्तियाक नाग साजिद आमला के लिए उनकी पहली गेंद इस बार जगह मिली उसको निकाला वहां पर हालांकि स्क्वायर लेग अंपायर की दाईं और जब तक उसको फील्ड किया जाता वहां पर दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन लेने का 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 1 विकेट के नुकसान पे 5.1 के बाद वसीम काचरू 25 पे नाबाद है 14 गेंदों का सामना किया और साजिद आमला 2 पे नाबाद 3 गेंदों का सामना किया हालांकि अगर वसीम खान की बात करें वे आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं एक दिग्गज बल्लेबाज लेकिन इस समय बीच मैदान में एक और दाकड़ जोड़ी बनी हुई इस ओवर में अगली बार इश्तियाक नाग की गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर बाहर निकलते हुए गेंद को लपेटना चाहते थे वहां पर वसीम काचरू लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ गेंद सीधे विराम करते हुए विकेटकीपर के दस्ताने में रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं स्कोर अभी भी 44 1 विकेट के नुकसान पर 5.2 के बाद जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण गालजू कुपवारा के इस खूबसूरत मैदान से रामहाल क्रिकेट लीग सत्र 1 वर्ष 2022 की प्रतियोगिता और दूसरा सेमीफाइनल आपको याद होगा पहले सेमीफाइनल में एससीसी हंदवाड़ा की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और यहां से विजयी टीम जो है वो तीसरी टीम बनेगी फाइनल में प्रवेश करके वहां भिड़ंत करने की इस बार कदमों का इस्तेमाल फिर वसीम काचरू चौके हालांकि रन लेना चाहते थे वहां पर साजिद आमला लेकिन मना किया रनों की गति में लगातार यहां पे एक अंकुश लगा हुआ है और ऐसे में इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से वसीम काचरू को बचना होगा शुरुआती क्षण है और हर गेंद पे प्रहार करने से बचना होगा विकेट के मजाज को थोड़ा सा पढ़ना है गेंदबाज को पढ़ना होगा थोड़ा सा समय बिताना होगा संयम रखना होगा और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होंगे मुनव्वर भाई Agree with your statement, and he needs to get his eyes in. It's 44 for 1. Oh, that's gone all the way for 6. What a shot, can you believe? Look at that, and it's a stand and deliver all the way over mid-wicket. 6 more, and with that 6, 50 comes up for Ramhall Reds in over number 6. It was ball number 4, dispatched all the way, stand still, and this is what
happen is when you stay patient out in the middle. This is the outcome of that, and he's reaping the harvest at the moment, and that is a wonderful shot. And this is Wasim Kachru at its best. Star of the Valley, 50 for the loss of 1. We are in over number 6. The last over of the mandatory restrictions is on. 50 से 1 विकेट के नुकसान पर इस आखिरी गेंद पर एक छक्का जरूर जड़ा था वहां पर वसीम काचरू ने, और गेंद सबब अभी तक मिली नहीं है। और ऐसे में हमारे पास थोड़ा सा समय है अपने वीवर से बातचीत करने का। शाहिद नजीर और साहिर सज्जाद भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए बट जमशीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और दानिश मीर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए हार्टलेस बॉय के साथ, और अजहर वानी उमर भी हमारे साथ बने हुए धन्यवाद। सभी व्यूअर्स का जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ। और ऐसा मानना है क्रिकेट के समर्थकों का एक बहुत बड़ा मुकाबला है जो कि निर्णायक कांटे की टक्कर का मुकाबला। दोनों छोर से अगर दोनों टीमों की बात करें, दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज, एक से बढ़कर एक मान्यता प्राप्त बल्लेबाज दोनों टीमों में खेल रहे हैं। तो ऐसे में क्रिकेट का जो महासंग्राम है वो समय बीच मैदान में, हालांकि पहली पारी चलती है, निर्धारित 20 ओवर का यह मुकाबला, और ऐसे में पहली पारी यानी कि टॉस आज विक्टोरिया कपवारा की टीम का कप्तान ने जीता, लेकिन पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। 1 विकेट जरूर मिल चुकी है, लेकिन रनों की गति पे वहां पर अंकुश लगाना होगा। जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज, हालांकि वसीम काचरू और वसीम खान ने आज पारी प्रारंभ की थी रामहाल रेड की ओर से, लेकिन वसीम खान एक तेज तरार पारी 24-25 रन बनाने के बाद वे आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। और मनोज भाई, इस समय अगर क्रिकेट के प्रति उत्साह देखें, दर्शक इस समय चारों ओर जहां नजर दौड़ाई जाए वहां पे बड़ा हुआ ये मैदान, और क्रिकेट के प्रति जो उत्साह है ये अपने आप ही देखने को बनता है। Absolutely right, and this should happen because this is a big game of glorious uncertainties underway. It's Ramhall Reds taking on their opponent side. It is Victoria Kupwara, but the valley-based stars are locking arms with each other here at the centre. Be it the Asif Rasool, be it Zur Peter, be it Said Saga, be it Ishtiaq Nog, and be it other stars. And look at the other side, Ramhall Reds. They got the likes of Zaga, they got the likes of Wasim Kachru in their lineup. They got other big names, Sajid Amla and others out in the middle. So you can understand it's a big game, and I told you earlier on, it's high octane. It's something special coming out below viewers way. This is the match of the summer, game of the summer coming out below viewers way. Join us in numbers, and I should say, where are you valley-based viewers of JK Sports Time? Where is my valley? Join us. It's the big match out in the middle, and join us in numbers and catch the action at your home comfort. It's 50 for the loss of 1. We are in over number 6 of the match. Nazir, Ishtiaq is bowling, Ishnag is bowling, has conceded 7 so far in his very first over. Amla is on to 2 of 3 bowls, and Wasim Kachru is around 20s of 17 bowls. And Shahid, Rathar Bashir and Saeed Tokir and me Javed, thank you for your love and support, and it's your love which makes our dream work time and again. And we love to thank our Fenestration Anthem Sports India, Fashion Feast, the Real Estate Pampur, Shining Star Pampur, and MHM Multi-Fashion Blended Store, Agri Clown Magam, and Akil, Ahil and Zakir Hussain and me Javed, the regular viewer of JK Sports Time. We are really indebted to your love and support, and join us in numbers and catch the game of glorious uncertainties. What a match! It's a semi-final match, high octane, and we are running short of words to explain how big this game is going to be. With the passage of time, and with the passage of time, I believe and I promise you, it's going to be high octane, and the ebbs and flows of the game will be at its peak, and it will be something special, and it will be new generation game at the moment out here in the middle. It's 50 for the loss of 1. We are in over number 6. Nazir. धन्यवाद शाह अहमद अंजर साहब अपना प्यार और विचार देने के लिए। अहमद शब्बीर, फैसल और तारिक मांकनो भी हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद तारिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत जल्द आप तक प्लेइंग 11 की सूचना पहुंचा दी जाएगी। हमारे लिए गौरवशाली बात है कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। तारिक मांकनो साहब, प्लेइंग 11 जो है उन तक पहुंचाना अवश्य होगा, और बहुत जल्द आप तक पहुंचा दिया जाएगा। मल्क मुसद्दिक भी और आशु मुजफ्फर के साथ बट जमशेद भी। स्थिति यह है 5.4 ओवर की गेंदबाजी, 50 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रामहाल रेड्स की टीम हालांकि टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस निर्णायक दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में, जो कि रामहाल क्रिकेट लीग सत्र 1 वर्ष 2022 के अंतर्गत इस समय बीच मैदान में क्रिकेट का घमासान होता हुआ पहले पारी चलती हुई वसीम काचरू इस समय नाबाद, और उनका साथ दे रहे हैं साजिद आमला। हालांकि 3 गेंदों का सामना किया है, 2 पे नाबाद है, और गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पर यह अपने कोटे का पहला ओवर फेंकते हुए इश्तियाक रसूल। इश्नाग वसीम काचरू के लिए उनकी ये गेंद, और इस बार फिर जगह मिली थी गेंद, हालांकि उनके शरीर पे जा लगी है। उस गेंद को मोड़ना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली। नजीर अहमद हमारे साथ बने, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार
देने के लिए जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए इस खूबसूरत क्रिकेट के महायुद्ध का, जो इस समय बीच मैदान में गालिजू कपवारा का खूबसूरत मैदान इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ मुकाबला रमहाल रेड्स और विक्टोरिया कपवारा के विरुद्ध चलता हुआ रमहाल क्रिकेट लीग 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत ये दूसरा सेमीफाइनल। एचसीसी रेड्स पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और यहां की विजेता टीम उसके साथ भिड़ेगी फाइनल में। इस बार फिर गेंद को खेलने की कोशिश, वहां पर जोरदार अपील, लेकिन रन आउट की संभावना। अगर गेंद स्टंप से जरूर लगी है सीधे, लेकिन तब तक सुरक्षित क्रीज पर पहुंच चुके थे। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 50। 6 ओवर समाप्त, यानी कि रिस्ट्रिक्शन जो है, फील्ड रिस्ट्रिक्शन वो समाप्त हो गई है। 6 ओवर में 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अगर बात करें इस बल्लेबाजी की मुनव्वर भाई, तो पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया है, हालांकि महत्वपूर्ण एक ही विकेट गवाया है। और ऐसे में जिस प्रकार से वसीम काचरू बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूं अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है अगर बात करें रमहाल रेड्स की। Wasim Kachru is senior campaigner out in the middle, and he needs to bat out of his skin today. And for those viewers who want to know the playing 11, Amir Hussain and others, you can go through, and we have got Planet Pope coming on JK Sports Time this afternoon, and at early this noon, and we are just heading towards the afternoon, and you can check. We have a Planet coming in this live broadcast, and you can go there and check and what is the playing 11 of both the teams, and you can clarify from there. So you may carry on and join us in numbers. 50 on the board for the loss of 1, 6 overs done and dusted. Well, the first power play yielded 50 runs, but now 14 overs remaining, 84 legitimate deliveries. Let's wait and watch how things will change from here on with the passage of time. Zoor is going to bowl. Thank you, Harkesh Kumar, But Salman, and Wage Amir, and P. Zishan and others. I'm really thankful to you guys. Mohammad Tahir for your love and support. Those who sending us the stars, we're also thankful to you guys. It's your love and support towards JK Sports. I'm Rishi Atif. We're also thankful to you, and you can join us in numbers. And it's your entertainment coming your way. It's a wonderful game of cricket, high octane, big match of the summer. It's a clash of titans underway here at the Sunday. Zohor will begin the fresh over number 7. We are in ball number 1 coming up. Ramhall Reds, they are 50 for the loss of 1. It's down to Sajid Amla out in the middle, and joined by Wasim Kachru. The Valley's famous wicketkeeper batsman is out in the middle, but Fayaz Ibrahim, Raja Arsalan, Tariq Rashid, Tufail Fayaz and others, thank you. Sayyid Talib Bukhari, same to you brother. It's 50 for the loss of 1. And we are in over number 7. The 2 umpires of the match, we got the umpiring sensation Advocate Hilal, joined by Merajuddin. These are the 2 umpires for today. Irfan, thank you for your love. 50 for the loss of 1. Fresh over begins, no slip at all. Third man back for the point. Extra cover short, extra cover long off. Long on in place, short mid wicket, Scalig on the boundary, and short backward Scalig in place. Ball 1 of over number 7. Pulled away and down to the backward Scalig boundary for 4. First ball yielded a boundary. Thank you, Lon Shahid, belatedly joining us. And a look at that shot, Nazir. It was pulled on middle and leg and asking for trouble, and batsmen dispatched that one in style and all the way down to the backward Scalig boundary for 4. 54 for the loss of 1. 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद से स्वागत किया वहां पर, हालांकि थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी लेग स्टंप पर और आमला ने इसको निकाल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए ज़ोहर सोफी ओवर में अगली बार फिर लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, और इस बार एडवोकेट हिलाल के दोनों हाथ हवा में, और संकेत इस बात का कि अतिरिक्त रन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 6.1 के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। साजिद आमला 6 पे नाबाद, वसीम काचरू 21 पे नाबाद, 19 गेंदों का सामना किया और पारी का ये 7वां ओवर लेकर के, यानी कि चौथे गेंदबाज आजमाए जा रहे हैं जहां तक विक्टोरिया कपवारा की टीम का सवाल है। शुरुआत आज आसिफ रसूल ने की और साथ सईद सागर ने दिया, उसके बाद इशनाक और अब ज़ोहर सोफी। बहुत बहुत धन्यवाद कमरान, थैंक्स आपका। और इस बार अच्छी गेंद वहां पर अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करने के बाद सीधा थ्रो वाला वहां पर विकेट पे जरूर लगा, लेकिन 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज, जब तक वहां पे गेंद उनके हाथ में आती तब तक पर्याप्त समय था 2 रन लेने का। 2 रन और खाते में जुड़ते 57 ने 1 विकेट के नुकसान पर 6.2 के बाद आत्मविश्वास संयम रखना होगा, अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा दोनों बल्लेबाजों का। पीरजादा आसिफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद जेके स्पोर्ट्स टाइम को सम्मान देने के लिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार विचार देते रहिए। बहुत बहुत आभारी रहेगी पूरी जेके स्पोर्ट्स टाइम की कमेंट्री टीम। वसीम भी हमारे साथ बने हुए हैं हिलाल ठाकुर के साथ, और शोपियान से हमारे साथ बने हुए प्रिंस लियाकत मनहास और सकीना शौकत भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए शाहिद खान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जुड़ जाइए, आकर्षक, निर्णायक और संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबला रामहाल क्रिकेट लीग 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत बीच मैदान में रामहाल रेड्स और विक्टोरिया
विक्टोरिया कपवारा के विरुद्ध चलता हुआ। हालांकि विक्टोरिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया हुआ है रामहल रेड्स को। अब तक 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद पारी का 7वां ओवर इस छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पे जहूर सोफी। इस ओवर में अगली बार आमला के लिए उस बार अच्छी गेंद पूरी तरह से वहां पर चकवा दिया। जोरदार अपील की जा रही है, अंपायर पर प्रभाव बनाने की कोशिश है, लेकिन अभी तक कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला अंपायर एडवोकेट हिलाल पर। संभवतः इसको नकारा, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 6.3 57 1 विकेट के नुकसान पर रामहल रेड्स विक्टोरिया कपवारा के विरुद्ध गालजू का खूबसूरत मैदान और इस समय इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ। 57 for the loss of one. We are in over number 7. 6.3 overs done and dusted. Fresh ball coming up. Zur bowling. He has conceded 7 so far. Goes away from us and goes to Amla. Oh, what a shot! It is a skyer. Gone over backwards, sky like 6 more. That is a superb shot. It was asking for trouble, and so does the batsman. Pulling that run with authority all the way over backwards, Scarlett for 6, half a dozen, and with that 6, it's 63 for the loss of one. We are in over number 7. What a shot on that occasion, and Amla playing that one with authority and quite middle to that one and all the way for 6. It's 63 for the loss of one. Over number 7, ball number 5 coming up. Amla and Wasim Kachru are making an impact here, serious impact, and what a batsmanship out in the middle. 63 for 1 after 6.4 balls. Goes and bows in the air, over backward a point, gone for runs, 6 of those. What a man he's in, can you believe? It's raining 4s and 6s here at the centre. Thank you, Harris, for your love. And look at that one in the air and all the way for 6 or backward a point. Amla joins the party. 69 it is for the loss of one. We are in over number 7. Ball number last coming up, 69 on the board, and Amla joins Kachru. He's into 20s and Kachru is on to 21 of 19 balls. Nazir, last ball to you. 69 1 विकेट के नुकसान पर लेग स्टंप पर फेंकी हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 ऑफ स्टंप पर फेंकी हुई और सीमा रेखा से बाहर 6। इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर, हालांकि सीधे बल्ले से खिला रन लेने की कोशिश वहां पर साजिद आमला द्वारा, लेकिन मना किया वसीम काचरू ने। ओवर पूरा हुआ, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 69 1 विकेट के नुकसान पर रामहल रेड्स की बल्लेबाजी इस समय गेंदबाजी पे हावी। और क्या कहना, जिस प्रकार से दर्शकों का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, और ऐसे में से कहना चाहिए क्रिकेट का महासंग्राम बीच मैदान में। जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए इस खूबसूरत मुकाबले का। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में। वर्तमान रन गति की अगर बात करें, 9.86 प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन बनाए हैं रामहल रेड्स ने, और यदि इसी रन गति से रन बनाते रहे तो 197 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसे में जिस प्रकार से दिग्गज बल्लेबाजी को देखते हुए माना जा रहा है कि 200 से अधिकतम का लक्ष्य होगा इस विकेट पे। क्रिकेट मानव जनताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं, लगातार जूझ रहे हैं वहां पर गेंदबाज, प्रयास जरूर कर रहे हैं कि साझेदारी को तोड़ा जाए, लेकिन धीरे धीरे से यह साझेदारी घातक होती हुई विक्टोरिया कपवारा के लिए। मनोहर भाई, 69 for the loss of one, absolutely right. When the two batters are out in the middle, they manage to put their heads down and they're stitching up ownership and then trying to convert into a substantial one. Nazir, absolutely, they are really making a mark here at the centre. हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और क्या लाजवाब प्रदर्शन और दिग्गज बल्लेबाज हैं, काफी अनुभव है उनके पास, चाहे वसीम काचरू की बात की जाए चाहे साजिद आमला की बात की जाए। लेकिन आज उनके समर्थक, उनके दीवाने चाहते हैं कि एक आकर्षक पारी दोनों छोर से देखने को मिले। इसी बीच इशनाक की गेंद, पहली गेंद लेकर के इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर, अंतिम समय में उसको मोड़ा और उस और खिलाड़ी है तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक 30 गज के घेरे के अंदर उसको फील्ड किया जाता तब तक संभवतः रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 69 7.1 के बाद। राथर अमजद, मीर जुबैर, शेख सलमान परवेज और सुहेल भट्ट भी हमारे साथ कैसर लॉन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण गालजू कुपवारा के इस खूबसूरत मैदान से आप तक पहुंचता है। इस बार ये गेंद, अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाकर के उसको मोड़ा, उस और खिलाड़ी जब तक फील्ड किया जाता जलील भट्ट द्वारा, तब तक का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। हालांकि दूसरा रन लेना चाहते हैं वसीम काचरू, लेकिन मना किया साजिद ने, और 1 रन और। लतीफ लोन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेके स्पोर्ट्स टाइम को अपना समर्थन देने के लिए। जुबैर फारूक, मीर जावेद, सूफी इजाज, कैसर लोन और मोहम्मद इश्तियाक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए धन्यवाद सभी व्यूअर्स का स्वागत करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच पर। ये गेंद और इस बार फिर अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर, हालांकि इस बार स्टोक में ज्यादा ताकत नहीं दे पाए, खेला जरूर 1 रन के लिए, 1 रन और अच्छी रन थी, लगातार स्कोरबोर्ड को गतिशील रखते हुए, और ये अच्छा कहा जा सकता है रामहल रेड्स के दृष्टिकोण से। 71 पे 1 7.3 के बाद।
Yeah, they should be trying by bringing on spinners at this moment because pacers are being taken to the cleaners. Thank you, Mir Zubair. Thank you, Tufail. Thank you, Ishfaq Ahmed Khan. And Mir Javed, the regular race, and Sophie. And thank you, everyone, each and everyone. Thanks a million, thanks a billion for tuning into the live broadcast. Thank you, Lone Pharaohs, Sheikh Irfan, Tasadduq Ali, Mir Javed, Hamad Malik, and others. 71 for 1. Next ball. And he wanted to keep that one out towards the back of the point. He was trying to, he was trying to send that one down to the extra cover, but all of a sudden up that queue and down to the short point, just a single. It's 72 for 1 after 7.4 balls. He manages to dig that one out towards the offside for a single. Jafar, Dartosi, Mir Javed and Bajanib. You can go through that pinned comment on Jiggy Sports Time this time and you will find out what's the playing 11. Oh, that's a good shot. Little swill on it, sexy Jalil, but there won't be able to cut it off, and that manages to beat the field all the way down to the boundary, and ball says to the fielder, save your legs, I will definitely beat you down to the boundary for 4. Now score moves to 76. Thank you, Taiba Jan, Usman Lone, Abdul Qaddus, Raja Khan and others, Prince Tassin and Usman Lone and Kessel Lone. It's 76 for the loss of 1. We are in over number 8. Last ball coming up. Current run rate is 9.70. You can understand as if what's going on at the moment. Absolute carnage. Absolute carnage here at the center. Complete unleashed. Amla and his colleague Kachu. That's a good ball. Lower better line, but equally to the task. Straight down to the fielder there at short extra cover. Asif Rasul the fielder. One more run added. It is 77 for the loss of 1. And Khurshid Ahmed Lone, Majid Al Top, Fahim Bhatt and Uwais Lone join us and catch the fun, the excitement, and you need that dozier today because we're going through the lean patch as for the valley is concerned. Soib Wani, Irfan, Javed Mir and Ishfaq Khan and others. Thank you. 77 for the loss of 1. This partnership is really turning it on. A breakthrough here is the need of an hour for Victoria Kupwara, but a partnership, if they manage to prosper with the passage of time, Nazir, believe me, 200 is still gettable from here on. हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिस प्रकार से इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, मुकाबला चल रहा है, दोनों बल्लेबाज जिस सहजता संयम के साथ आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे वे साजिद आमला हो चाहे वसीम काचरू हो, लेकिन यहां से एक विकेट की आवश्यकता। इस साझेदारी को ऐसे तैसे करके तोड़ना होगा विक्टोरिया कुपवारा को यदि इस मुकाबले में कुछ प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को मिले, कुछ प्रभाव छोड़ने को वहां पर यदि वे चाहते हैं तो ऐसे में इस साझेदारी को तोड़ना होगा। फिलहाल साजिद आमला सामना करने के तैयार। 8 ओवर की समाप्ति, 77 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रामहाल रेड्स का स्कोर। पहले टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर बल्लेबाजी करते हैं। इस बार गेंदबाजी जहूर पीटर संभलते। एक और परिवर्तन और पहला स्पिन आक्रमण, पहली गेंद, और इस बार लेग अंपायर इसको मोड़ना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली। वाइड का इशारा अंपायर एडवोकेट हिलाल द्वारा 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 78, 1 विकेट के नुकसान पर। और एडवोकेट हिलाल और महराजुद्दीन की अगर बात की जाए इस मुकाबले में जो कि अंपायरिंग करते हैं, इस गेंद के बाद चर्चा जारी रखेंगे। इस ओवर में अगली बार, इस बार अच्छी गेंद वहां पर मिडल स्टंप पे फेंकी, उसको खेला, 1 रन पूरा किया। आदिल बशीर बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ साजिद आमला के। वार आमिर भी हमारे साथ बने हुए हैं और नईम अहमद के साथ शोएब राज भी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79.8 के बाद अब्दुल मजीद भी इस मुकाबले में बने और बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल मजीद का भी। ये गेंद जोर पीटर की और इस बार ऑफ स्टंप पर इसको 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाला। गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, लेकिन उस और खिलाड़ी उन्होंने फील्ड किया। दूसरे रन के लिए वसीम काचरू निकल पड़े थे, मना किया वहां पर, और 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 80 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या निर्णायक और महत्वपूर्ण मुकाबला, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ दर्शकों से, दर्शकों की आवाजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। खूबसूरत मुकाबला। अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला और वहां पर जोहर पीटर ने उसको फील्ड किया बगैर किसी रन के। 8.3, 80 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रामहाल रेड्स का स्कोर। ये गेंद और इस बार फ्लाइटेड गेंद, ऑफ स्टंप पर जगह मिली, सीधे बल्ले से आमला ने चहलकदमी करते हुए वहां पर 1 रन पूरा किया। अच्छी रणनीति वहां पर दोनों बल्लेबाजों की और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81, 1 विकेट के नुकसान पर 8.4 के बाद वसीम काचरू इस समय संभवतः 24 पे नाबाद है और साजिद आमला 28 पे नाबाद। 15 गेंदों का सामना किया। इस बार जोहर पीटर की गेंद अपील की जा रही है लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। तब तक दोनों बल्लेबाज अपने छोड़ बदल चुके थे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता 82। और वातावरण देखिए क्रिकेट के अनुकूल, 26-27 डिग्री का तापमान और कुदरत के बेहतरीन नजारों के बीच बसा हुआ मैदान गालिजू कुपवारा का तिरछा बॉलिंग रनअप के साथ। इसी बीच ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद, अपने आप को वहां पर संतुलित करते हैं, जगह बनाते हैं खेला, लेकिन उस और खिलाड़ी जलील भट्ट थे, उनको भेद नहीं पाए। ओवर पूरा हुआ 9 ओवर की समाप्ति के बाद 82, 1 विकेट के नुकसान पर साजिद आमला 28, वसीम काचरू 25।
It's 82 for the loss of 1 after 9 overs, scoring at the rate of 9.11. That means they can get to 182 with the same pace. Mir Nasir, Sahil Khande, Kesselon, Prince Zubi and Kesselon and Paulie Plumber and Smart Adi and Mir Javed. Thank you everyone. Thank you everyone and each one for your love and sport. And Ayan Sharif Wright saying thank you Mir Javed. It's 82 for the loss of 1. 9 overs done and dusted. Over number 10 will begin in a while. Sohail Butt, Blackburn, Kesselon, Sohail, Pervez, Sheikh Faru and others. 82 for 1. We are in over number 10. Ball 1 coming up. Prince Zubi and others. This broadcast is brought to you by Arco Fenestration, Anthem Sports India, Fashion Feasta, Real Estate Pampur, Shining Star Pampur, an amateur multi-fashion branded store. Mudassir Malik, Manzoor, Basit Loan, Harun Maidin Sheikh and Meet Zahur. These are the beloved viewers of JK Sports Time, and every beloved viewer is there to us. Thank you everyone. We are really thankful to you and indebted to your love and sport. Big Mushtaq for those Mir and Mir Shaukat. It's 82 after the completion of 9 overs, 11 overs remaining, 66 balls, and with the same pace, they're scoring at the rate of 9.11. It means they're scoring at a rapid pace. If they manage to prosper and propel with the same pace, 200 is still gettable, and it's within the radar and within the limits. And one more change in the bowling department. It will be Jalil, isn't? Yes, Jalil Butt will be bowling. Another prospect from South Kashmir will bowl from other end, and Azur Peter bowled that wonderful over from this area, and a fresh ball that's gone over. Oh, there is a chance for the fill in the deep, and there goes wicket number 2. It's Wasim Kachru, nicely held by Umar Setu there at sweeper cover, and there goes wicket number 2. It's 82 for the loss of 2, and Wasim Kachru has to walk back. Thank you, Professor, for your love and sport. And Attar Bano and others, and Amir Junaid and Prince Zubi were seeing the back of wicket number 2 in over number 10. The very first ball, we were talking about spinners can weave the web, and that's what's happening. Spinners and their spin is paying the rich dividends at the moment, and they're in a hurdle. It's the celebration time in their lineup, and they are in a hurdle. Somebody writes in, we have a match on this afternoon that will be played between Baramulla Blasters. Umar Bat, thank you for your love. This will be played between SKCC Gulura, and in that very match Ishtiyaq Rasul will be the part of that very match, and we shall be going live this afternoon from Panditpura also, and we will be bringing you all the fun from their Sportsville. And my colleague in the com box is smiling at the moment, and Nazir, yeah, we have to provide the live broadcast to beloved viewers, but at the moment it's 82 for the loss of 2 after 9.1 ball. 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9.1 के बाद जैसे ही दोहरा स्पिन आक्रमण वहां पर उसका प्रयोग किया गया और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई। और कहना चाहिए अगर पिछले मुकाबले की भी बात करें इस मैदान पे, तो स्पिन गेंदबाजी को अच्छी खासी मदद मिली है इस विकेट से, और ऐसे में जैसे ही स्पिन आक्रमण का प्रयोग किया गया तो सफलता मिलती हुई, और वह भी वसीम काचरू संभव थे आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। 82 2 विकेट के नुकसान पर 9.1 के बाद, और इसमें फिर दोस्त आए हैं नए बल्लेबाज, और देखना है किस प्रकार से वे साथ देंगे। साजिद आमला नाबाद है जो कि 28 पे नाबाद है, 16 गेंदों का सामना किया, क्या लाजवाब प्रदर्शन, लेकिन यहां से एक साझेदारी की आवश्यकता है। और इस समय दर्शकों का उत्साह देखिए, एक बेहतरीन वातावरण क्रिकेट के अनुकूल, और अपनी टीमों का मनोबल बढ़ाते हुए। 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद रामहाल रेड्स की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, और इस समय गेंदबाजी के मोर्चे में जलील भट्ट 1 विकेट की खुराक लेने के बाद नई उत्साह और ऊर्जा के साथ वे गेंदबाजी करेंगे। यहां से शौकत मीर भी हमारे साथ, कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक सोपोर से सागर लोन और मीर जुबैर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। जलील भट्ट 1 विकेट उनको मिल चुकी है पहले ही ओवर में, पहली गेंद पर, और इस बार सामना करने के लिए तैयार है फिरदौस के लिए उनकी ये पहली गेंद, सीधे बल्ले से खेला, अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश, हालांकि गेंद उनके हाथ से लगने के लिए छिटकी, और जब तक आसिफ रसूल उसको फील्ड करते हैं रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 82 2 विकेट के नुकसान। एक बार फिर अच्छी गेंद पे सबसे बाहर लपेटने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से चकमा दिया, और गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने हुए। विकेट कीपर बिल्कुल सम से सदे हुए किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए, और ऐसे में 82 2 विकेट के नुकसान पर पारी का 10 ओवर चलता है। जलील भट्ट की गेंद फ्लाइटेड गेंद सीधे बल्ले से खेला, और खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया बगैर किसी रन के। अच्छा ओवर अब तक किफायती कसा हुआ, नपीतुली गेंदबाजी, एक विकेट के बाद रनों की गति में मानो इस समय विश्राम सा लगा हुआ है। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर हल्के से मोड़
छोड़ा, उसको एक रन पूरा कर रहे हैं जब तक उसको फील्ड किया जाता संभवतः आसिफ रसूल द्वारा। तब तक का पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। एक रन और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83, 2 विकेट के नुकसान पर 9.5 के बाद मात्र 2 रन आए हैं इस ओवर से और एक ही रन आया है, क्षमा कीजिएगा, और एक सफलता भी जरूर मिली है। बट रहमान खाकसार और उमर भट्ट भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। मुजम्मिल मंजर के साथ अश्विन कश्मीर और मीर रियाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। जलील भट्ट ओवर की आखिरी गेंद लेकर के 83 पे 2 ये गेंद और इस बार साजिद आमला, हालांकि चौके वहां पर विकेट कीपर भी एक रन पूरा कर रहे हैं और एक रन के साथ ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और कुल योग बढ़ता हुआ 84 रन। 10 ओवर पूरे हो चुके हैं, आधी बारी समाप्त हो चुकी है रामहाल रेड्स के लिए और 84 रन बने हैं स्कोरबोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पर। महत्वपूर्ण 2 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज वसीम खान और वसीम काचरू, जिन्होंने आज पारी प्रारंभ की थी, प्रारंभिक जोड़ी थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। मंसूर मलिक, AR मुनीर वानी और आरिफ मीर भी हमारे साथ, शेख सलमान परवेज के साथ आमिर शाह, फारूक भट्ट और मुनीर वानी भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं लोन मुबा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण गालजो के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान से आप तक पहुंचता है। और की शुरुआत पहली गेंद और इस बार सीधे बल्ले से मिडल स्टंप पे आती हुई गेंद को खेला जरूर वहां पर साजिद आमला ने। एक रन के लिए एक रन के साथ ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और कुल योग इन परिस्थितियों में पहुंचता हुआ 85, 2 विकेट के नुकसान पर 10.1 के बाद रामहाल रेड्स टॉस हारने के बाद और दर्शकों का उत्साह, शोर और इस समय उसी बीच ये सेमीफाइनल निर्णायक कांटे की टक्कर और क्रिकेट का महासंग्राम बीच मैदान में चलता हुआ। रामहाल क्रिकेट लीग 17 वर्ष 2022 के अंतर्गत ये प्रतियोगिता और दूसरा सेमीफाइनल, हालांकि एससीसी रेड्स पहले ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद बैकवर्ड पर जाकर खेलने की कोशिश, काफी आगे निकल चुके हैं वहां पर साजिद आमला और खतरा हो सकता था उस शॉट पे, लेकिन मना किया। वापस क्रीज में सुरक्षित साजिद आमला को इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा क्योंकि शुरुआती क्षण है, ऐसे में यहां से वो विकेट नहीं खोना चाहेंगे। कितना महत्वपूर्ण योगदान रहेगा उनका इस मुकाबले में वे जानते हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर सीधे बल्ले से खेला, वहां पर फिरदौस वानी ने, एक मंजे हुए बल्लेबाज, और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे क्योंकि दिग्गज चोटी के दिग्गज बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है यदि बात करें फिरदौस वानी की। इस ओवर में अगली बार जोहर की गेंद और इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पर, फिर इसको खेला, हालांकि उस ओर खिलाड़ी है लेकिन इस बार एक रन मिलेगा जरूर दोनों बल्लेबाजों को। एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 86 जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर 10.4 के बाद साजिद 30 पे, फिर दोस्वानी 2 पे 7 गेंदों का सामना किया। जोहर पीटर तिरछे रन के साथ उनकी ये गेंद फ्लाइट कदमों का इस्तेमाल साजिद आमला द्वारा, लेकिन उस और खिलाड़ी है तैनात इश्तियाक रसूल सबबते। जी हां, जब तक उनसे गेंद फील्ड होकर के गेंदबाज के हाथ में पहुंचती, एक रन और खाते में जुड़ता हुआ सिंगल्स डबल से स्ट्राइक रोटेट रखते हुए अच्छी रणनीति, एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति से अपने आप को यहां पर बचाने की आवश्यकता। इस बीच गेंद और फिर ऑफ स्टंप पर, फिर उसको खेला, उस और खिलाड़ी है वहां पर रन लेने की कोई संभावना नहीं है और ऐसे में वापस सुरक्षित अपने कदम क्रीज में खींचे। ओवर पूरा हुआ, 11 ओवर की समाप्ति के बाद 87, 2 विकेट के नुकसान पर रामहाल रेड्स का स्कोर। मुदस्सिर अहमद मलिक, खाकसार, मुजम्मिल मंजर भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक का पहुंचता हुआ प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपोर, MHM आर्को फैन स्टेशन, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ UPVC डोर्स एंड विंडोज, रियल एस्टेट पामपोर, फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। धन्यवाद। और इस समय अब्दुल्ला फैब्रिक्स हैदराबाद से हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। इसी प्रकार से आपके प्यार और विचार की आवश्यकता है। अदनान लोन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने हमें सम्मानित किया है, जेके स्पोर्ट्स टाइम को सम्मानित किया है और आभारी रहेगी पूरी जेके स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम। MK बहुत बहुत धन्यवाद। साजिद आमला, यानी शफीक ख्वाजा भी हमारे साथ बने हुए हैं और स्वागत आपका। प्रीतम कुमार भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, शौकत वगे और प्रीतम कुमार के साथ सईद जाकिर, मलिक सब्जार भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जलील भट्ट एक बार फिर और उनके सामने है फिर दोस्वानी, उनके लिए ये गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला और एक रन पूरा कर रहे हैं वहां पर दोनों बल्लेबाज, हालांकि दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे लेकिन मना किया। एक रन से संतोष, स्कोर बढ़ता हुआ 89 पे पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। 11.2 के बाद रामहाल रेड्स का साजिद 32, फिर दोस्वानी 3। सामना करने के लिए साजिद आमला, इसमें जलील भट्ट उनकी ये गेंद और इस बार बैक पर जाकर के उसको ऑन साइड में मोड़ा। उस और खिलाड़ी काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी सीमा रेखा से आकर के जब तक उसको फील्ड किया जाता है इश्नाक द्वारा। तो एक रन और खाते में जुड़ता हुआ 90 हो गया है कुल योग 2 विकेट के नुकसान पर 11.3 के बाद। वर्तमान रन गति 7.83 और प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो 157 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में बने हुए, विकेट को सुरक्षित रखना होगा और उसके बाद स्ट्रोक्स लेने होगा। अगली गेंद खेला उसको और एक रन और लगातार इस समय स्कोरबोर्ड को गतिशील रखे हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी रणनीति, खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान और सिंगल्स डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखते हुए ये अच्छा कहा जा सकता है रामहाल रेड्स की टीम के लिए।
साजिद हाशिम, फैसल अंसारी, दानिश नजीर भी इस बार अगली गेंद उसको खेला, लेकिन इस बार रन नहीं मिलेगा। आसिफ रसूल है वहां पर, जैसे ही देखा गेंद उनके हाथ में, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी 91 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ, मजा लीजिए। और इस बार गेंद हवा में उस और जलील भट्ट, लेकिन कहना चाहिए एक जीवन दान मिलता हुआ साजिद आमला, हालांकि निराश अपने स्ट्रोक से बैक फुट पर जाकर के खेलने की कोशिश। जलील भट्ट की अगर बात करें, और एक चतुर गेंदबाज है, इस बार जैसे ही देखा साजिद आमला जो है जगह बनाकर, रूम बनाकर स्ट्रोक ले रहे हैं, तो ऐसे में गेंद की गति को थोड़ा सा कम किया और लंबाई भी थोड़ी सी कम करी। ऐसे में उस चाल में जरूर फंसाया था, लेकिन उस और खिलाड़ी तैनात नहीं था, अन्यथा परिस्थितियां कुछ और होती है। मुनव्वर भाई, 91. Well, it's 91 for the loss of 2 after the completion of 2 overs. The game has completely changed, and that is the beauty of the game of glorious uncertainties. My dear colleague in the com box, you need to understand how cricket can change its class, and spinners are able to weave the web, and they're not allowing them to break free. It's 91 for 2 after 12 overs. Preetham Kumar, Pirzada, Sheikh Sahil and Basit Lone and others. Thank you. He writes in Dire Dire. Thank you for your love and sport. And Zulfkar and Mir Mubashir and Parim Mudassir, thank you once again for your love and sport. It's 91 for 2. We are in over number 13. We're going to be in over number 13. Thank you, Haris, for your love. Yeah, second match of the day. It will be Panditpura Premier League. Baramulla Blasters will face SKCC Glura. The second match of the day. High voltage again. And we shall be going live this afternoon there after 2:30, and it's 2:30. We shall go live with the second match of the day. It's Zulpeter to bowl the fresh over. It's 91 for 2. Over number 13, ball 1 goes and bows to Firdoswani on driven down towards the long on, and in the meantime both the batters will fetch a single. It's 92 for 2. We are in over number 13. Last 4 overs really been absolutely brilliant. Thank you, Asghar Baba, Mudassir Tele, Azhar Butte and Mir Lone and Mudassir. Thank you. Oh, that's in the air. Aerial down to the long off, another run added to the tally. This is sensible cricket going on, rotating the strike, and rotation of strike is another key aspect at the moment, and they need to rotate with every passing ball. It's 93 for 2. We are in over number 13. Next ball coming up to Firdoswani. Lifted that one up. Upish. Will this be the fielder down towards the boundary? Days. Oh, what a stop. Can you believe? Can you believe? It's acrobatism at its peak. And Ishtiyaq Rasul, the man, Ishnaq, the man, who puts in that slide. And what could have been a boundary? For a while, I thought that's gone all the way. But look at Ishtiyaq and his acrobatism at its peak. It is just a single. 94 for 2. We are in over number 13. Mudassir, Junaid, Asghar Baba, Junaid and Mir Ahmed and Junaid Sabir. We will be going live this afternoon at Panditpura Premier League. This is semi-final number 2 of RCL Ramhall Cricket League year 2022. It's Victoria Kupwara taking on Ramhall Reds. The toss won by earlier on this man Zulpeter, and he opted to bowl first. And after being put into at Ramhall Reds, they're 94 for 2. Next ball coming up, goes and bows to Amla, and Amla driven that one with the soft hands down towards the long off. Another run added, one more run taken. 95 it is for 2 after 12.4 balls. Nazir would love to thank multi-fashion branded store Agriclan Magam. It's 30% off today. It's a big announcement from amateur multi-fashion brand store that 30% is off on every item today. Whosoever goes there should go today, and let's grab the opportunity with both hands. Go there, amateur is ready. 96 for 2. Next ball. Oh, look at that turn. Stands tall and playing that turn all the way down towards the thank you Asghar for your love, and Ghulam Mohammed and others with that single. 97 it is for the loss of 2. Nazir, 13th over it is. 97 on the board. Mir Maqsood Kashmiri, thank you. Abdul Qadus, regular viewer, thank you. Mir Gulzar and Jack Lone is also watching the live broadcast. We'd like to thank him. Jangir Lone is catching us live, then followed by Tariq Manknu and all other beloved viewers. And Mir Hassan is always there, and Gulzar Ahmed is catching us live. And Gawaraman, one of my beloved teachers, is following this very live broadcast, because this is a high voltage game coming their way. Oh, look at that turn. He wanted to slog that turn, but nonetheless off the cue and off the bottom end of the blade down to the mid-wicket area. Both the batters fetch one, and a mass it to the field. It's 98 on the board for the loss of 2. 13 down. Nazir, 7 overs remaining, 42 balls with 8 wickets in hand. What do you think? I believe that rule 8 is still gettable, but they can really go past that mark and that trigger. What do you think?
हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण अगर बात करें तो 8 विकेट हाथ में है रामहल रेड्स के, और ऐसे में 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और एक और महत्वपूर्ण बात मनवर भाई के फिरदौस वानी और साजिद आमला की निगाहें अब धीरे धीरे से जम चुके हैं। इस बार हम चर्चा जरूर करेंगे। इस बार जलील भट्ट की गेंद खेला सीधे वहां पर, और जितनी भी प्रशंसा की जाए आसिफ रसूल की उतनी कम। क्या बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन करते हैं वो क्षेत्र रक्षण में। हालांकि गेंदबाजी भी कमाल की है, लेकिन इसमें क्षेत्र रक्षण में बेहतरीन प्रयोग करते हुए। तो बात हो रही थी इस मुकाबले को लेकर के। जलील भट्ट है इस ओवर में, ये गेंद और बार लपेटा उसको, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर, साजिद आमला के बल्ले से निकलता हुआ एक और दर्शनीय स्ट्रोक 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ही स्कोर 13 अंकों में पहुंचता हुआ 104 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर इसमें प्रगति पर वसीम राजा हमारे साथ बने हुए, मलिक फयाज के साथ रईस लोन और जुबैर भट्ट इस मुकाबले का आनंद। अच्छी गेंद द्वारा ऑफिस से बाहर लपेटने की कोशिश, हालांकि गेंद का पीछा जरूर किया था साजिद आमला ने, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे विराम करती विकेट कीपर के दस्ताने में। उमर बुखारी एमएचएम बाय रफी वानी 30% ऑफ ऑन ऑल आइटम्स। जी हाँ बिल्कुल, और ये हमारे व्यूअर्स तक पहुंच चुका होगा ये सूचना। और ऐसे में इस गेंद को खेल करके वहां पर कोई रन नहीं बना, स्कोर अभी भी टिका हुआ 104 2 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर पारी का, और ऐसे में 8 विकेट हाथ में है, तो एक आकर्षक पारी अब यहां से देखने को जरूर मिलेगी। इस बार अगली गेंद को निकाला 2 खिलाड़ियों के बीच में से, लेकिन उस ओवर खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड किया जाता संभवतः सईद सागर द्वारा, और पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 105 2 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 14वां ओवर प्रगति पर। सैयद सज्जाद बुखारी बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार विचार देते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि बेहतर से बेहतर संबारंग आप तक पहुंच सके। इस बार अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, खतरा हो सकता है, लेकिन तब तक गेंद दिशाहीन थ्रो आता हुआ, और पर्याप्त समय था, दूसरा रन भी पूरा कर लिया 2 रनों के साथ ही। 107 14 ओवर पूरे हो चुके हैं। 107 14 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर, और कहना चाहिए 6 ओवर का खेल बचा है। फिरदौस वानी और साजिद आमला की जोड़ी। साजिद आमला इस समय 43 पे मात्र 7 रन अपने अर्धशतक से दूर हैं। तो ऐसे में कल्पना की जा रही है कि 180 190 का लक्ष्य जो होगा वो शायद उनके दिमाग में जरूर होगा, लेकिन देखना है किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करते हैं आने वाले ओवर्स में। 107 पे 2 14 ओवर की समाप्ति के बाद रामहल रेड्स का स्कोर। Thank you, Abdul Rashid and Wani Javed, Jahangir Mushtaq and Abdul Qudus. It's 107 for the loss of 2. We are in over number 15 of the match. Spin from both ends. It's the high time to brought on the spin, says captain up front. Now it's down to captain, and he will be bowling one move. Thank you, Ishfaq Sheikh, for your love. He's watching from London. Exactly, brother. Thank you for your love. I'm really thankful to Irshad Nazir. Yeah, it will be 2 and it will be 2:30. We shall be going live from there. And look at that one, the very first ball. That's going goal, guns blazing. One bounce into the extra cover boundary, says Advocate Hilal as umpire, exercising his left arm and signals that's a boundary. 111 on the board, Nelson on the board. How many times you see that? 111 on the board, Nelson. It's a historical term. Won't go there. It's 111 for 2. We are in over number 15 of the match. Again, Firdaus Wani and Amla on to 47. 3 needed, 3 short. Professor, thank you. Oh, it was that to be put away. But off the cue end, wicketkeeper goes across, feels that one, but the 2 batters in the meantime scamper through for yet another single. 112 for 2, and Amla moves to 48 of 33 balls, and Firdaus Wani on to 9 of 14 balls. Zoor Peter continues to bowl. Asghar Baba, Javed Akhun, and Junaid Sabani Jafar and others. Thank you. And thank you, she has really been behind me, and I'm really thankful to Mighty Lord that people like her are really blessed by Mighty Lord, and they're really backing me up time and again. Thank you, and Asghar, and thank you Mummy for her love, thank you, and Shahid Sofi, Ghulam Nabi, Mir Majid Gulzar and Kaksar and others. And Nazir, it's 112 for 2, and Junaid Saab and others are watching. Nazir, 112 for the loss of 2 with 5.4 overs to go, 5.4 balls. What you think, Timmy? 180 is gettable. What you think? जी बिल्कुल, क्योंकि साजिद आमला और फिरदौस वानी जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अवश्य है 180 तक पहुंच सकते हैं। इस बार अगले गेंद, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी, और गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौका के साथ ही 116 रन, और अब दोनों बल्लेबाज ये बात स्पष्ट कर चुके हैं, उनके इरादे स्पष्ट हो गए हैं कि किस प्रकार यहां से, क्योंकि 8 विकेट हाथ में के स्ट्रोक से देखने को जरूर दर्शकों को मिलेंगे। Exactly, that's a good shot. Lifted up, one bounce,
And Firdoswani into the double figure straight away. He's on to 13 of 15 balls. 116 for 2. Next ball coming up. Goes and goes. Oh, good shot in there. And Jalil Bhatt pairing that one off his fingertips down to it is the wideish extra cover, wideish mid off to be precise. Ishnock the fielder does the rest. The two batters fetch another single. Numan Ali, thank you for your love and sport. It's 117 for the loss of 2. And oohs and ahs, noise around the park is going on. What a way and what an atmosphere out in the middle for cricketing. Next ball. Oh, what a shot. No need to run for those. And a massive to count you very much. That's gone like a traceable. And that brings up the 50 of Sajid Amla in style. Darzaki, thank you for your love. And look at that. And thank you, Shaukat Rashid. And what a shot. Slogged away, swept away in a jiffy. All the way down to the boundary. And Amla is on to 52. And Ramhall Reds, they won 21 for 2 after 14.4 balls. What a match underway, and he's quite a player out in the middle. Next ball, that's a good ball and does well. Zulpeter or Nandaras will get a single for it. One more run added, 122 for 2, 15 done. Being put into bat, they won 22. Loss of 2, 5 overs remaining, 8 wickets in hand. ओवर की समाप्ति 122 2 विकेट के नुकसान पर। यह है अब तक का लेखा जोखा। और फिरदौसवानी इसमें साजिद आमला 53 रन बनाकर 35 गेंदों से क्या लाजवाब दर्शनीय और चमत्कारी पारी आज खेली है हासिम साजिद आमला ने। क्षमा कीजिए, यहाँ है सभी दर्शकों ने अभी मान दिया और ऐसे में क्या लाजवाब पारी खेली है इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में रामहाल रेड्स की ओर से। 15 ओवर समाप्त 122 2 विकेट के नुकसान पर। वर्तमान रन गति 8.13 और इसी गति से रन बनाते रहे 163 रन पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में 70-180 का लक्ष्य जरूर अवश्य होगा उनके दिमाग में और ऐसे में दोनों बल्लेबाज उसी मुद्रा में एक बड़े स्कोर की ओर रामहाल रेड्स की टीम। जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर हार्दिक अभिवादन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे जिस प्रकार से अपना प्यार और विचार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत। हमारे पास शब्द नहीं है कि आपका स्वागत किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से आपने अपना प्यार विचार दिया है और यदि आप चाहें तो आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी सम्मानित कर सकते हैं, अपना सुझाव रख सकते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के लिए ताकि बेहतर से बेहतर प्रसारण आप सभी व्यूअर्स तक पहुंच सके। लॉन कैसर, बाबू यूनस, डार जुनैद और हारून रफीक भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। मोहम्मद सलीम मीर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए यासर गनई और मीर उसामा के साथ सलीम डार भी बहुत बहुत धन्यवाद सलीम भाई। और इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए। बासित लोन हमारे साथ बने हुए हैं। स्थिति यह है 15 ओवर पूरे हो चुके हैं, 122 रन रामहाल रेड्स की टीम ने बनाए हैं इस निर्णायक दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। आपको याद होगा कि पहले सेमीफाइनल में एचसीसी रेड्स की टीम जो है वे फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और यहाँ की विजेता टीम जो होगी इस मुकाबले में यानी कि रामहाल रेड्स और विक्टोरिया कपवारा से जो टीम विजयी होगी इस मुकाबले से वे एचसीसी रेड्स हंदवारा के साथ भिड़ंत करेगी फाइनल मुकाबले में। वसीम बशीर, खाकसार और तैयबा जान भी हमारे साथ काजीगुंड से बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोन इशफाक चौधरी मंजूर के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण गालिजू कफारा का यह खूबसूरत मैदान जहां से सीधा प्रसारण आपकी सेवा में लेकर के हम उपस्थित हैं। और प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम आर्को फैन स्टेशन, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज, रियल एस्टेट पांपोर, फैशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का भी अपना समर्थन सहयोग देने के लिए और जिसके चलते यह संभव हो पाया कि जेके स्पोर्ट्स टाइम क्रिकेट जगत का जम्मू कश्मीर क्षेत्र का एक ऐसा वाहिद मंच जो क्रिकेट के हर कोने से हर संभव खबर आप तक पहुंचाता हुआ। 122 2 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर पूरे हो चुके हैं। फिरदौसवानी और साजिद आमला की जोड़ी बीच मैदान में। साजिद आमला जो कि 53 पे नाबाद हैं, 35 गेंदों का सामना किया, नाबाद सामना करने के लिए तैयार और देखना है आखिरी के इन 5 ओवर में कितने रन बटोरेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात होगी दोनों ओर से। वहां पर नासिर मीर भी हमारे साथ बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी मंजूर भी हमारे साथ, बट आमिर के साथ आखिरी 5 ओवर और यदि इन बची हुई निर्धारित 30 गेंदों से 50-60 रन और जोड़ लेते हैं तो 170-180 का लक्ष्य अवश्य होगा क्योंकि इस समय कोई दबाव की स्थिति नहीं होगी दोनों बल्लेबाजों की क्योंकि विकेट के मजाज को परख चुके हैं। और की शुरुआत पहली गेंद साजिद आमला के लिए इस बार अपने आप को संतुलित करते हुए कोई मौका नहीं और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई संभवतः 4 रनों के लिए। तो पहली गेंद पर स्वागत किया वहां पर गेंदबाज बिलाल का और चौके के साथ ही व्यक्तिगत योग इस समय साजिद का 57। 57
57 उनका व्यक्तिगत योग और कुल योग 126 2 विकेट के नुकसान पर 15.1 के बाद साजिद के लिए बिलाल राइट आर्म ओवर द गेंदबाज जो कि तेज गेंदबाज है, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, फिर गेंद का पीछा किया लेकिन इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया और चकमा दिया बल्लेबाज को। 15.2 के बाद 126 लगातार प्रहार कर रहे हैं साजिद अमला क्योंकि जानते हैं अब रनों की आवश्यकता है, विकेट कोई महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसे में एक आकर्षक संघर्षपूर्ण मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। Thank you, Farooq Kasana, Mir Zubair and others. It's 126 for the loss of 2. We are in over number 16. Next ball from Bilal. Oh, look at that one. Will this be the field? No, it doesn't. Ball slowing up a bit of the outfield. Not electric, not electric. And it should have been electric quick, but it isn't at the moment. Thank you, Professor. Thank you again. It's 128 for 2. We are halfway down into the 16th over. Amla is on to 59 and Firdaus is on to 14 of 16 balls. Talab John, myself, Munawar Tanveer, and a shot for caught behind, and umpire raises the finger. Can you believe? He looks back in disbelief and Amla has to walk back, and we'll have to wait and watch. We're seeing the back of wicket number 3 and Amla Imran Mushtaq, thank you, and Amla has to walk back. He is completely distraught and he doesn't want to leave the centre, but he will have to walk back. He seems to be unhappy, but Amla is crying at the moment. It's 3 down. Thank you, Nasir Panditpuri and others for your love. Nazir was in the back of third round. The set bat out in the middle. The ball kissed the thigh pad, about thigh pad, but he thought that it has kissed the blade on the way to wicketkeeper. But it's 128 for 3 and then good decision. If we look at the sky, killer skies at the centre. Around the park, way away from the centre, there are clouds on the sky, but we can say it's bleed blue as per the sky is concerned. And look at this beautiful centre of cricket. And somebody writes in, well, all players need to work on the basics, and you're absolutely right. We need to show that temperament, and that's why I throw out a thank you, Shaukat Ibn Ahmed. It takes tremendous character to play, to stand like a rock of Gibraltar out in the middle. It isn't a joke, and it isn't everyone's cup of tea. 128 for the loss of 3, 15.4 balls done in dusty. 2 balls remaining in over number 16. And Amla, who got his eyes in, has to walk by, and there comes. It's 22 was Nayyam and Muzammil Manzar and Mir Javed and thank you. It comes down to this man. And everyone is talking about that sportsman spirit and sportsmanship. Thank you. And it's Nasir Ganai walks into the middle. Waterman is in. It's 128 for 3 and what a way to make his appearance at the centre. And what a time to make his way out to the centre. It's all set for him. The stage is set. The foundation is laid. The strong foundation is laid. It's 128 for 3. We'll have to wait and watch. 4 overs and 2 balls are going to come. And let's wait and watch. Is Nasir Ganai going to rule the roast? Is going to go without bothering anyone, without bothering the scorers. It's 128 for 3. And Nasir Ganai mocking the fresh cord will face the very first ball. It's 128 for 3. Over number 16, ball number 5, Bilal. He comes down the track. Oh, that's gone all the way. And it's a 6 more. 1 more 6. 134. Well, I was just talking about this man. Walks into the middle. The very first ball whipped away. And all the way for 6, and what a way to get underway and off the mark in style. This is Nasir Ganai for you. On the very first ball he announced himself, and Ramhall they 134 for 3. We are in over number 16 of the match. Keep watching Cricket Sports Time. You can send us the digital token of law, and we have an announcement for you guys. SKCC Gulura locking horns with Baramulla Blasters this afternoon. Join us, and Amateur Multi-Fashion branded store has an announcement that 30% is off on every item today. Go there and grab the opportunity. It's Agriclan Mogam. And in the meantime, 134 for 3. And Nasir Ganai on the very first ball whiffed away that one all the way for 6. And we'll have to wait and watch. We lost the ball, I think so, and umpire is asking for the new ball. But you can see what a build-up. Crowd in numbers watching the match, physically available, and we have got a wonderful viewership on Cricket Sports Time early this afternoon. And Ratha Sajad Racing, Nasir Ganai, he's a great player and he's a nice stroke maker. And look at that one, as strokes that one all the way and smoked to that one all the way for 6.
and Sophia Dawes and others writing in more Matt Junaid and others. It's 134 for 3 after 15.5 balls, 25 balls remaining. Cricket League, 25 balls, not bad. 25 balls mean quite a lot. 4.1 over to come. And what do you think? And we like to thank all the beloved viewers who sent us the digital token and coupon of love to entire team of JK Sports Time. Thank you, Harun, Rafiq and others. You can send us in excess as you wish. You can send us how much you want to send in. You can send, but we are really going to thank you guys for your love and support. It's 134 for 3. We are in over number 16. Last ball coming up. Nazir, you may carry on. 134 नासिर गनाई है सामने, उनके लिए ये गेंद इस बार क्या ऊंचा लंबा हिस्सा, लेकिन हवा में है गेंद, उस और खिलाड़ी तैनात गेंद को कैच कर लिया और नासिर गनाई आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक जरूर खेला था, लेकिन स्ट्रोक में ताकत नहीं दे पाए, गेंद हवा में ज्यादा उठी और उस और खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, ऐसे विकेट को जाल में फंसाया। तो कहना चाहिए नासिर गनाई आज मात्र एक छक्का जड़ने के बाद वापस पवेलियन लौटते हुए निराश कदमों के साथ 134 पे तीसरा विकेट गिरता हुआ 15 चौथा विकेट, क्षमा कीजिएगा चौथा विकेट, 16 ओवर पूरे हो चुके हैं। 134 4 विकेट के नुकसान पर नासिर गनाई 6 रन बनाने के बाद 2 गेंदों से पवेलियन लौटते हुए। Nasir Ganai has to walk back, and this is really against the run of play. Tosif Ahmed, thank you, and Tufail Karim and Shiraz Wage and others, thank you. But this is an good spirit shown by Nasir Ganai. His team needed himself badly. Shiraz Wage, thank you, and Instagram Milan Tipnish, thank you. Sohail Bashir and Arif Khan and others. 134 for 4 after 16 overs, 24 balls remaining, and Nasir Ganai sending the ball off to the park, whipped away. Prior to this one, whipped away the ball over mid-wicket. But on the very next ball, no need. He could have easily knocked that one into the gap. He could have easily clipped that one onto the onside for a quick single. But look at him, what he has done. And Ramhall, and they lost big gun. And Mohammad Iqbal, thank you, and our appreciations for you too, thank you. And Sheikh Zakir and Adil Lone and others. It's 134 for 4. We are in over number 17 of the match, and Asif Rasool back into the attack. Professor is watching, thank you. JK Sports Time is your lifeline, is our lifeline, and it belongs to you guys. You are the beloved viewers, you are the people behind it. 134 for 4. Or clipped away. Both the batters will scamper through. Yeah, Firdoswani is still out in the middle. He's battling it out. He's sweating it out. One more run at it. And Zakir Bablu walks into the middle. 135. Raman, Deep and Zamir, Maqsood, Mir Zubair, Mir Jabin and Afaq Hamid and others. Thank you. 135 for 4. Over number 17. Ball number 2 coming up. Nazir. 16.135 4 विकेट के नुकसान पर, और इस समय आसिफ रसूल राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद उस बार ऑफ स्टंप पर जगह मिली 2 खिलाड़ियों के बीच में से, लेकिन उस और खिलाड़ी जब तक वे फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 136 4 विकेट के नुकसान पर 16.2 के बाद निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला रामहाल रेड्स और विक्टोरिया कपवारा के विरुद्ध। गालिजो कपवारा से ये सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप चाहते व्यूअर्स तक पहुंचता हुआ। इरशाद नजीर भी हमारे साथ बने हुए हैं मीर जावेद के साथ, और हिलाल मलिक भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। हालांकि जाकिर इस समय बीच मैदान में, और फिर दोस्वानी भी उमर बुखारी। Thank you Umar Bukhari for updating us. Javed Darial, the umpiring sensation of the valley, is catching us live this time around. Thank you. And underarm pull, but straight to short mid on. Short mid wicket, clear mid wicket in possession. No run, 136 for 4. धन्यवाद। और एक और अनुभवी अंपायर जावेद दरियाल हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। इस बार अगली गेंद सीधे वहां पर खिलाड़ी के हाथ में, जलील भट्ट ने कोई गलती नहीं की और एक और विकेट का पतन होता, 5वां विकेट गिर गया है। और यही क्रिकेट की अनिश्चितता है, कब दर्शेगी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और 5वें विकेट के साथ ही 136 पे 5 रामहाल रेड एकदम से एकाग्रता भंग हुई, और मुकाबला इस समय किस और लुढ़कता चला जा रहा है, शायद किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी। 136 5 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में आसिफ रसूल को मिलने वाली एक और सफलता। और क्या कहना, क्रिकेट की खूबसूरती दर्शते हुए समय इस बीच मैदान में। Don't you think that Ramhall Reds, Firdaus Suwani, thank you for love and support.
and Javed Daryal, the umpiring sensation of the valley, is catching a slide this time around. He has done umpiring, he has officiated games in the Gulf countries too. And thank you sir for your love. Muzammil Mir Javed, Irshad Nazir Faisal, and every beloved viewer is welcomed on JK Sports Time this afternoon. It's 1:36 for 5. You don't think that they are losing their track where they were? They are detracted from that. They were going on to pile up a big score in excess of 180 or beyond that, and even I thought for a while that 200 is still gettable from there on. But at the moment they are now 5 down, half of the team back into the pavilion. There's still 136. 20 balls on their disposal. I don't believe they can fetch some runs from here on to set the tone up for that. और हनीफ बिन अजीज की जोड़ी बीच मैदान में, नए बल्लेबाज करके स्ट्रोक जरूर खेला, लेकिन वहां पर 136 16.5 के बाद 5 विकेट के नुकसान पे हनीफ बिन अजीज सामना करने के लिए तैयार। 0 पे आसिफ रसूल की गेंद ऑफ स्टंप पर जगह निकाल दिया उसको सीमा रेखा की और अब सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। हालांकि निराश है वहां पर आसिफ रसूल, वे चाहते थे कि शायद ये 4 रन खाते में न जुड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि प्रयास जरूर किया था वहां पर क्षेत्ररक्षण ने, लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली और 4 रन और खाते में जुड़ते। 17 ओवर पूरे 140। रामहाल रेड टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर पहले बल्लेबाजी करते हुए, और 3 ओवर का खेल बचा, यानी कि 18 गेंदें बची हैं। 140 5 विकेट के नुकसान पर हनीफ बिन अजीज 4, जाकिर 1 पे नाबाद। तो देखना है बचे हुए इन 3 ओवर से कितने रन और बटोरेंगे यहां से। 140 for 5 after 17 overs. Over number 18 is in progress, and it is Hanif bin Aziz off the mark with that boundary, and it comes down to now Zakir Bablu. He will be facing the ball number 1 of over number 18, and it will be a testing time for Ramhall Reds bowling in the second innings, when they will come on to bowl against the likes of Ishnag, Asif Rasool, Amay Setu, Jalil Bhatt, the big guns, and it won't be easy to keep those big guns under check, and they were definitely up to roll from ball 1. It's 140 for 5. Thank you, Tariq bin Bashir. Oh, the ball 1, it was a off tracker, and batsman missed on that occasion, and that should have been put away in style, but he was beaten all enders up. Thank you, Mohammad Iqbal, for your love and sport. It's 140 for 5, and he's talking about radio era. Thank you once again. It's 140 for 5. We definitely love to thank Javed Daryal, Gaba Rahman, Mir Hassan, Gulzar Ahmad, Tariq Maknu, and others. Thank you. That run up the outside edge, and Said Saga putting in the dive. That could have been a boundary. Limited the scoring down to a couple, and that brace takes the score to 142 for 5. We are in over number 18. Mohammad Iqbal once again. Thank you. Basit Lone and Tawqir and Mir Maqsood Kashmiri. Thank you for law and sport. Yeah, absolutely right. It is the combination. It is the combo, inshallah, and it shall continue in the future also. 142 for 5 after 17.2 balls. Avais Khan, Mir Maqsood and Aki Bhatt. Next ball coming up. Zakir Bablu is on strike. Here comes. Oh, that's in the air. Has that gone all the way? Does it carry? Does. Philly Max, no mistake. Settling underneath the ball. Wicket number 5, and Bablu has to walk back. It's now 6 down, 142, and Ramhall Reds in a spot of order here. After 17.2 balls, Bablu going for that ugly swing and heave, but ending up straight down to the throat of filler there at Skalak, and as Zahu the filler does well, holding on to the ball, and we're seeing the back of 6th one. It's 142 for 6 after 17.3 balls, halfway down into this over. Thank you, Mir Hazim, for your love, and Vani Umar, and it's 30% off on every product today at MHM Multi-Fashion Branded Store opposite Petrol Pump Magam, and you can go there and grab the opportunity. Ayaz Keen, Muhammad Umar, Vani Umar, Mir Hazim, and others. Thank you for your love and support. We are really indebted to your love and sport. Keep sporting JK Sports Time. Raja Sabzar, Ayaz Keen, and Ashik Hussain. Walaikum salam, brother, and walaikum salam to entire viewership of JK Sports Time. Projected score says 160, and official field writes in something, and Zuzaid and ERU belatedly walaikum salam, brother. Where are you? It's 142 for 6 after 17.3 balls. We are in over number 18. Ball number for Arfat War. Walaikum salam.
142 for 6, and over number 18 is in progress. Bilal is operating. He has picked up 3 wickets and conceded just 14 runs. And he has been the highlights with the ball today. He has picked up 3. He has chipped in with 3 wickets. And then normally we see that Said Sagar Badgam Express doing the job with the ball, but today it was Bilal's turn. And Mir Hazim, thank you again, thank you. I'm really thankful to you. And Sheikh Iqbal is the regular viewer, and others, thank you. And in the meantime, 142 for 6, we are in over number 18 up the match. Bright sunshine out here, lush green outfield available for cricketing, but outfield is an electric creek. The very first ball, played it back to the bowler. Regulation catch, 7th one bites the dust. Oh, what's going on? Oh my goodness, wicket number 7, ball 1, and Muhammad has to walk back, playing it back to the bowler, and bowler does Magre Ajay, thank you, and he does well. Ayalskeen and Amir Bhatt and Professor and Kupwara, what they are doing at the moment. Amir Bhatt, Professor Muslim, and Baba Bilal and Abid Nabi, thank you for your support, and I love to thank Gabar for his love, and Javed Darial is watching us. Another umpiring sensation of the valley is officiating today's match is Advocate Hilal, joined by his colleague Merajuddin. He is his second counterpart out in the middle. They're officiating the all important semi-final number 2. Last time due to that a worrisome decision made by umpire on that occasion, and that posted us to about the game. And regular viewer Professor, thank you for your love, Professor Lon Raju, Ajay Kumar and Maruf Mir, everyone is welcomed. It's 142 for 7, ball 5 coming up. 142 7 विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद लगातार अंतराल के बाद विकेट से गिरते चले जा रहे हैं, और ऐसे में बिलाल इस ओवर में अगली बार 3 सफलता उनके खाते में जा चुकी है। 14 रन दिए हैं इस बार, अगली गेंद को खेला, 1 रन पूरा कर रहे हैं, वहां पर मिसफील्ड का नतीजा, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। जब तक उसको फील्ड किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 2 रन लेने का। 2 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 144 7 विकेट के नुकसान पर 17.4 के बाद 17.5 के बाद इस समय बीच मैदान में आदिल और हनीफ बिन अजीज की जोड़ी, और अंत तक खेलना होगा क्योंकि बचे हुए ये 2 ओवर्स में देखना है कितने रन बटोरते हैं। ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश होगी, 155-160 का लक्ष्य देना होगा यदि इस मुकाबले में बने रहना है। इस ओवर में अगली बार बिलाल की ये गेंद, और फिर जगह ऑफिस नंबर 2 खिलाड़ियों के बीच में से, लेकिन उस ओर सईद सागर है, उन्होंने गेंद को, क्षमा कीजिएगा उमेश है वहां पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता 145। और अगर विक्टोरिया कपारा की बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज जो है उनका नाम हम आप तक पहुंच नदीम, जो के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं विक्टोरिया कपवारा के, और आप तक ये सूचना भी पहुंच गई होगी। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबला, और विकेट के चारों ओर, मैदान के चारों ओर जहां पर भी जिस दिशा में भी नजर दौड़ाई जाए, खचाखच मैदान दर्शकों से भरा हुआ, और क्या निर्णायक मुकाबला है। हालांकि रामहाल रेड्स की टीम एक समय में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी, मात्र 125 पे 2 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद बिलाल ने शानदार लाजवाब प्रदर्शन किया और 3 विकेट उनके खाते में गए, जिसके चलते उन्होंने पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है। हालांकि अभी भी 145 रन जरूर बना लिए हैं 7 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर का आना बाकी, और ऐसे में इस छोर से, यानी कि इशनाक का छोर बदला गया है, पहले उस छोर से गेंदबाजी की थी, लेकिन अब इस छोर से कमेंटेटर मंच से उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया है। 18 ओवर समाप्त, 145 7 विकेट के नुकसान पर। वर्तमान रन गति 8.06, और इसी रन गति से बात करें तो 161 तक पहुंच सकते हैं। प्रोफेसर हमारे साथ बने हुए रेगुलर व्यूअर, बहुत बहुत धन्यवाद। इशफाक शेख, नदीम वानी और मोहम्मद सलीम, और इस बार दर्शकों की आवाजें गूंजती हुई, और इशनाक चले पहली गेंद लेकर के, अच्छी गेंद ऑफ अंपायर, समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज आदिल, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। हालांकि परेशानी में है, असहजता महसूस करते हुए इशनाक के विरुद्ध, लेकिन इन बचे हुए ओवर्स में अब कुछ विस्फोटक बल्लेबाजी दिखानी होगी, अपने हाथ खोलने होंगे, और ऐसे में वे 160 तक पहुंच सकते हैं। साकिब रेशी हमारे साथ बने हुए हैं रईस अहमद ठोकर के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। 145 7 विकेट के नुकसान पर इशनाक, राइट आर्म, उनकी ये गेंद, बच्ची गेंद, इस बार पूरी तरह से फिर चकमा दिया, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, और ऐसे में इन ओवर्स में जबकि बल्लेबाज इस समय जो है बेहतरीन प्रहार करने की मुद्रा में होता है, लेकिन अभी तक सक्षम नहीं हो पाए। 2 गेंदें दोनों ही डॉट, 18.2, 145 पे 7 मुनव्वर। Thank you, Professor, for your lights. 145 for 7. The next ball from Ishtiaq Rasool, and that's a dot ball, 3 on the trot, and it's hat-trick of dots, and he has been able to make it 3 on the trot. It's hat-trick of dots. Thank you, Umar Sultan and others. 145 for 7.
Fourth ball coming up, 3 dots, and Ramhall need runs. They need badly. They need 2 wickets to set up the good score. 145 isn't it defendable to me, given the team of Victoria. Next ball, back of the hand. That should run away. Down to the third man boundary for 4. And there is the big stand in front of that stand. That goes down to the boundary. 149 for 7. A welcome boundary belatedly, but they will take that. 149 isn't a bad total at the moment for the loss of 7. And they have still 8 balls at their disposal. 149 विकेट के नुकसान पर ये अंतिम चरण, अंतिम समय है इस पारी का। पहली पारी निर्धारक 20 ओवर का कोटा और टॉस हारने के बाद आमंत्रित तौर पर इसमें रामहल रेड्स की टीम ने 149 रन बना लिए हैं। 18.4 के बाद 5 विकेट लेकर के इशनाक उनकी ये गेंद, और इस बार फिर इसको मोड़ा। वहां पर बल्लेबाज आदिल ने 1 रन के लिए 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे लेकिन मना किया। वहां पर खिलाड़ी है उस ओर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ ही 150 रन पूरे होते हुए 157 विकेट के नुकसान पर, और इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर के हालांकि 5 रन इस ओवर से अभी तक आए हैं इशनाक ने अभी तक इस ओवर में, और कहना चाहिए नपीतुली कस्सी क्या भाई गेंदबाजी इस ओवर से। ये गेंद, और इस बार गेंद हवा में, ऊंचा स्ट्रोक, नीचे खिलाड़ी, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में गिरती। 3-4 खिलाड़ी उसके पीछे, लेकिन तब तक 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। और अब दिशाहीन थ्रो, जहां पे 1 ही रन होना चाहिए था, वहां पे दूसरा रन भी पूरा करते हुए निराश है वहां पर इशनाक अपने क्षेत्र रक्षक से, और निश्चित तौर पर दोनों के साथ ही ओवर पूरा हुआ। 19 ओवर समाप्त, 152 पे 7 रामहल रेड्स का स्कोर। आखिरी ओवर बचा है, 6 गेंदें, और कितने रन बटोरेंगे ये देखने वाली बात होगी। Oh, thank you, Professor, and we definitely love to see people from different parts of the globe joining us in numbers. But Nazir, it's 152. What happened today? From bad to worst, from worst to worsening, from good to better, from better to best. Everything we have seen today, and this is the beauty of the game of glorious uncertainties. And this is Latif Wani, for your kind information. We are trying our level best to unearthing the talent that we possess in abundance in the valley of Kashmir, but we are lacking one thing, Latif Wani, for your kind information, that our cricketers still need to work on the basics. They doesn't know how to be patient out there in the middle. There is sportsmanship, there are other rules and regulations of the game. For your kind information, you may change your brain first. It's 152 for 7, but you have a good suggestion, no doubt. That's in the air. We'll have to wait and watch. Who's coming underneath? Who's coming? And who's wanting that? And it is the fielder from long off, Ishtiaq Nag. Once again, the true legend is out in the middle. Safest pair of hands. And he has caught him on that occasion. It's 152 for the loss of 8 now. We're into the final. Ball 1 yielded a wicket. It's 5-4 to this man, Bilal. 5-4 to him. What a man he has been with the ball today. It's a dream spell for him in a semi-final match. Getting 5 wickets for just paltry 17. That tells how magnificent he has been with the ball, how wonderful he has been with the ball, and he has been the wonderful prospect, golden arm with the ball today. It's 152 for 8. You may carry on. 152 8 विकेट के नुकसान पर 19.1 के बाद ये 8वां विकेट गिर चुका है, और ऐसे में हनीफ बिन अजीज नाबाद है। 3 गेंदों का सामना किया, 6 रन अभी तक बनाए हैं। और जैसे ही अगर हम इस मुकाबले की बात करें, हालांकि ये आखिरी ओवर चलता हुआ, और समय अनुसार जो इस समय जो निःशुल्क समय था 12:30 का 12:30 का पहली पारी समाप्त होनी है, और ऐसे में 2 मिनट अधिकतम हो गए पारी को, तो कुछ गेंदें बची जरूर है, लेकिन बेहतरीन कार्य किया आज अंपायर्स ने। अगर बात करें एडवोकेट हिलाल और उमराजुद्दीन की, पूरा अनुभव झोंका इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर पहुंचते हुए, आखिरी 5 गेंदें बची हैं, और गेंदबाजी का दायित्व बिलाल के पास। 5 सफलताएं बिलाल के खाते में 17 रन देकर। क्या कहना इस गेंदबाज का, लाजवाब, विश्वसनीय, आकर्षक प्रदर्शन आज देखने को मिला है गेंदबाजी का। 152 8 विकेट के नुकसान 19.1 के बाद नए बल्लेबाज इस समय अंपायर से गार्ड लेने के बाद तैयार। मुजम्मिल है संभवतः, जी हां, और हनीफ बिन अजीज नाबाद हैं 6 पे। तो देखना है किस प्रकार से बिलाल का सामना करते हैं। 152 8 विकेट के नुकसान पर दूसरी गेंद लेकर के दर्शकों का शोर, मिडल स्टंप पे आती हुई गेंद को खेला, 1 रन पूरा कर रहे हैं वहां पर दोनों बल्लेबाज। दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे, तेज दौड़ विकेट के बीच, जब तक थ्रो आता स्टंप्स में, तब तक क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके थे। 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 154 19.2 के बाद 4 गेंदें आने बाकी। We'll have to wait and watch. 3 more runs added to the tally. What will be the score after this ball? It will be 155, isn't? Yeah, 155 for 8 after 19.2 balls. There are some of the beloved viewers, they want hassle-free, flawless broadcast, and they're talking about those advertisements. Don't worry, buddy.
international cricket is being promoted and is being backed by sponsors, and time and again cricket has evolved. There was a time when Uttapal Bhattacharya and others used to do commentary. They were not able to throw out the names of the sponsors, but with the passage of time things have really changed and we can really throw out the names of the players. In the meantime, Bilal comes on to bowl the next one. Oh, that's a good ball. That is a good ball. And as on that occasion, slower up a bit of the back of the hand delivery on that occasion. It's a dot ball. 155 for 8. Nazir 3 ball done and dusted, 3 remaining. We'll have to wait and watch how they will be operating for the next 3 balls. It's 155. What's your take? 155 8 विकेट के नुकसान पर आखिरी 3 गेंदें और इस ओवर में गेंदबाजी जिस प्रकार से बिलाल ने की है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इन ओवर्स में आखिरी के ओवर में इस प्रकार की गेंदबाजी करना लेकिन इस बार सफलता ऊंचा लंबा स्ट्रोक खूबसूरत दर्शनीय स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से उठा दिया था और छक्के के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 161 रन 19.4 के बाद Commentators curse and he bowled superbly today, picked up 5, but look at that and what was that? It was a half track and it was a cooked up, overcooked delivery and it was asking to be hit, and so does the batsman, and he dispatched that run over mid-wicket for 6. It's 161 for the loss of 8. Ball number 5, 161. Hanif bin Aziz on strike. Oh, what a shot! Has that gone all the way? One bounce and into the extra cover boundary for expensive coming up. It's now 10 up 2 balls, 165 on the board and 2 bad balls, and both have been put away by this man Hanif bin Aziz, and these 10 runs are coming handy for Ramhall Reds. They're 165. Last ball coming up, and Perez says need a 6er to end the innings, and we'll have to wait and watch. Can he end the innings on a high? It's 165. Last ball coming up. 165 it is in the air. Chance for the fielder. Wicketkeeper trying to unable to caught that one, and the ball pairing away down to the skyline. The 2 batters are back for the second. It's 167. 168 is what Victoria Kupwara will require from their latter 20 years, and we shall be back with the chase in a while. It will be Victoria Kupwara chasing 168. Till then, take good care of yours, and it's time to say bye bye to you guys. Bye bye and adieu, tata. We shall be back with inning number 2 chasing 168 will be Victoria Kupwara. Thank you. Bye, adieu, tata.